Good morning, everyone. Today we have CA Divesh Harpalani sir with us. He has secured AIR 6 in CA Inter and AIR 13 in CA Final. He has completed his articleship from one of the big fours, that is Deloitte, and currently he is working in Brains and Company. Speaking about his curriculum, he has done. I have read his resume. He has done. He is an all-rounder. ICI in 34th International CA Student Conference, and he has actively participated in many activities in ICI like elocution competition and won many of them. And he has also been awarded out of best paper presenters in 4 paper presenters, right, sir? Out of 6. Yeah. And you also have a YouTube channel. I've gone through that. That is, I think, CA Inside Angel. You all can also connect on that YouTube channel and take guidance from the sir about career counseling and for how to prepare for CA exams and how to keep our approach towards it. So, sir, I would like you to take over the session. Sure. Thanks, Aishwarya. And first of all, before I start, I want to thank WICASA, CSN, especially Govind and Aishwarya, who've tried to put them with the idea. And they liked the idea and they were all ready to go ahead with it. So, first of all, thanks for going ahead with the idea. And I really feel that this session is much needed 1 month prior to exam, and this be really full. So, without wasting much, let's straight away dive into it. But before that, I'm sure a lot of you who have joined will have a lot of questions from me, and I'll take those questions for sure. What we can do is there are like 3 parts to this question. One is for the code, 1.5 days for exam. The next part is how to write exam paper. Second is how to write exam papers, in what sequence, what should be choice of questions, etc. And the third is how to be mentally prepared for exams, if I'm to put it that way. What we can do is maybe after each of these topics are done, we can open the floor for any questions that you have, and you can ask those questions which I can answer. You can raise your hands through Zoom, that is possible. And let's keep the questions only after each topic and not in between the topic. I hope that works well. And I've created a poll. I don't know how this works, but I just want to understand how many of you are CA Inter versus CA Final students. Okay. Do you see the poll? If yes, could you just help answer the poll so that I just know how many of you are in CA Final versus CA Inter? I can slightly try and modify my approach accordingly. I mean, any which ways, the session is fit for both CA Inter and Final students. But just so that I can give relevant examples. No need to type on the chat box. What you can do is you can just put it in the poll. So far, I see 6 responses, like 12 participants. And if I exclude myself and the 2 WICASA people here, there'll be like, cool, no worries. I'll take this as representative of the entire population, which means majority are CA Inter versus few are CA Final students. Cool. I'll just project. I've created a very rough deck, but this should be mostly helpful in conveying what I want to. So I'll just go ahead and project it. And just let me know in the chat box if you can see my screen. I know it's not come up yet. Yeah, can you see the screen now? I think you can. Super. And just one request, guys, if you could turn on your video, it will help make it an interactive session for me. I'll not find it a monologue. At least मेरे को पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. And I'm assuming you guys are fine with a mix of English and Hindi. अगर ऐसा हो कि if you want me to switch to complete Hindi versus complete English, just feel free to mention it in the chat box and just have a look at it. Cool. Yeah. So, like I said, first of all, I'm glad we are hosting this session. One thing I've always felt is, so far as the CA course is concerned, I mean, there's no doubt to the fact that it's a tough course, and that is the reason not everyone
ends up pursuing it, etc. But for those who pursue it also, what makes it tough is not just the toughness of the content within the course, but I feel it's what makes it tougher is actually the quantum of the course, the size of the course, and you having to cover it within a short span of time. मतलब इतना जो आप 3 साल में पढ़ाई करते हो सीए फाइनल की, वो आपको अल्टीमेटली वो 1.5 दिन में आपको रिवाइज करना है. एंड सेम फॉर सीए इंटर एज वेल, आपने 9-10 months पढ़ाई की होगी एंड वो आपको 1.5 days में रिवाइज करना है. That is what really makes it tough. And this session pretty much will help you cover on how you can overcome that. So going ahead with the first topic, in terms of how can you cover the course in 1.5 days. So first is what resources should you be using? And इसमें ना काफी tactical inputs मैं दूंगा. And by the way, guys, for those of you who put on your video, thanks a lot. But those of you who have not, please do put on the video. It will help me make it an interactive session. Yeah. So what I was saying is essentially in terms of the resources. Now, last 1 month to go for exam. So एक महीने पहले you will be in your last revision, I'm assuming, or last couple of revisions, I'm assuming. So at this is the best point in time to actually plan for the last 1.5 days. And I'll tell you why. So सबसे पहले ना in terms of the resources, what I had done, and I'll share with you whatever I had done, and you can take cues from it. कि सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके बुक्स एक साथ सेपरेटली रख लिए. लाइक इफ आई एम कीपिंग अकाउंट्स वर्सेस लाइक एफआर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो एफएम की सारी बुक्स एक साथ रख दी वर्सेस एससीएमपी की सारी बुक्स एक साथ रख दी, सो दैट आपको एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के बुक्स नहीं ढूंढनी. डोंट इवन वेस्ट दोस 15 minutes. Why to waste? Much rather have those books together, kept separately subject. Okay. That is the first and the most basic point. But this is still a hack because most people don't understand it. And then काफी बार तो ये हो जाता है, अब इतनी सारी बुक्स है सीए की, मेरे को तो याद है इंटर में 24 मॉड्यूल्स आई और 24 मॉड्यूल्स है और आपकी कितनी ही क्लास नोट्स होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इतनी सारी बुक्स में आपकी कोई एक बुक खो गई, आप अपना 1-1.5 घंटा वो बुक ढूंढने में वेस्ट कर. So that is not something which is advisable. So please have all the books kept separately subject wise. Now, in terms of which resources to use in practical versus theory subjects. So basically, in terms of practical subjects, the one thing that I've really found helpful is hota kya hai na, across, like if it is an account versus a costing or SFM or FM, whatever. So what happens now is there are a lot of concepts across the chapter because of obviously of the quantum of the course. Now what happens is ke apna, even if you want to revise the concepts, you'll have to look at, let's see, spread over 200 pages across a 800 page or a 600 page books. So relevant 100-200 page ढूंढने में you will end up spending a lot of time. So what I really found helpful, and this was more for CA final for me rather than CA inter. CA inter में summary notes की इतनी मेरे को जरूरत नहीं लगी because class notes were equally helpful. But what I will suggest is whether in terms of class notes or your own summary notes, chapter wise, let us just try and make sure you create a separate concept book. For example, जैसे labor costing है या material costing है for inter versus let's say SFM का कोई chapter है for CA final, let's say forex है, तो forex के इतने सारे concepts हैं, labor costing के इतने सारे concepts हैं. Much rather what you would want to do is just, yeah, I agree, it might not really be possible, but on that, so if you've already made summary notes, it is great. If you've not, then this is a hack that I would want to give. What happens now is, let's say the first page, पहले पेज पे कुछ concept है, then the next concept is on the 6th page versus the next concept is on the 15th page. So one very helpful strategy over here is, आप first page पे concept खत्म हुआ, उसके बाद next concept अगर 6th page पे, तो उधर आप लिख दो page number 6, and then आप page number 6 पे तुरंत you can flip through. You'll not have to spend time in searching कि अच्छा next concept कौन सा है, वरना क्या हो जाता है, in the process you'll end up wasting time in searching those pages, plus काफी बार वो pages miss हो जाएंगे. What if you end up missing a concept? So page 1 के end पे you write page 6, page 6 के end पे you write page 15 if that is the next concept. So that is how you at least, so even if that is not a summary that you've created, this is a hack wherein you'll be able to cover things faster. So, and when it comes to those 1.5 days, it is about covering everything in a very short span in time. So we have to try to increase our efficiency, and these are very small hacks, but it will help you save a lot of time, each of these. So if you can make summary notes, and for practical subjects, summary notes concept is not very tough, by the way. So it will be what, hardly 5 pages per chapter, and let's say there are like 10-15 chapters, so क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 pages हो जाएंगे.
आप पढ़ते पढ़ते भी अगर इस रिवीजन में साथ साथ में नोट्स अगर लिखते जाते हो ना, नॉट डिटेल्ड नोट्स, लाइक वेरी बेसिक ब्रीफ नोट्स इन टर्म्स ऑफ सम को मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा, दिस इज हाउ आई हैव टू डू इट एक्सेट्रा, और यूनिक पॉइंट्स ऑफ ईच सम, तो 50-60 पेजेस का आपका नोट्स बनेगा. And this is something that even I had done my second revision. Obviously, last 1 month of exam might not be the right time. But if you feel this will be helpful to you the day before exam, you can do that. If not, then आपकी जो भी ऑलरेडी नोटबुक है या क्लासेस की बुक है या मॉड्यूल है, उसमें ही आप पेज रेफरेंसिंग करो. तो that is one thing that is extremely important. The next thing here is in terms of notes for concepts from sums. What happens is most of the sums in a chapter are interrelated and similar sums, except for एक आध नया एडजस्टमेंट होता है. अब हर सम में एक नया एडजस्टमेंट तो होगा, तो उस एक एडजस्टमेंट के कारण आप हर एक सम सॉल्व करने बैठोगे तो आपका 1.5 दिन में कोर्स खत्म हो गया. So इसके लिए what I had done is for CA final, by the way, so I'll just project you what I had made notes for this chapter PGBP, because उसमें there were like 60 odd sums, but I concluded there are just 3 types of sums and बाकी सारे सम में शायद एक एक नया एडजस्टमेंट की. तो अगर मैं वो 3 sums प्लस वो एक एक नया एडजस्टमेंट कवर कर लेता हूँ, तो I will actually get done with the entire PGBP in let's say 30, 40, 50 minutes. Versus अगर मैं 60 sums cover करने जाऊँगा, it will end up taking me 2-3 hours. So without losing that quality, I will end up covering the entire chapter, and I'll show you how. And this might be actually helpful. Not necessarily do it for all chapters, but you can actually do it at least for selective chapters like PGP, जहाँ पे बहुत सारे sums हैं, but you can cover it with very less time. So what I had done is this is like these are like the notes that I had prepared. Like you can see 19 pages over here. क्योंकि PGBP in CA finalist बहुत बड़ा, तो इसमें ये कर दिया कि मैंने सारे जो यूनिक एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए, और मैंने 2 या 3 जैसे सम्स डिसाइड कर लिए चैप्टर में कि विच आर वेरी होलिस्टिक, बहुत बड़े सम जिसमें मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स गेट कवर्ड, एंड जो वन ऑफ एडजस्टमेंट्स है आई सिंपली नोटेड डाउन. तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू द डे बिफोर एग्जाम इज वो 3 सम्स कवर करो एंड फटाफट सिर्फ ये नोट्स के थ्रू गो थ्रू करो. दिस वे ऑल 60 सम्स आर कवर्ड विदाउट यूजिंग कॉल. For example, let's say, let me read out this one. Even if cash payment made to due to bank strike disallowed under section 40A3, because bank strike not explicitly mentioned under the rules. अब ये वाला एक एडजस्टमेंट था किसी एक सम में जिसमें उसको डिसअलाउ कर रखा था. अब मैं उस सम में जाके सिर्फ वो एडजस्टमेंट देखूंगा, विल एंड अप टेकिंग मी अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज़ पहले तो मेरे को सम का कंटेक्स्ट लाना पड़ेगा. मच रादर हैव इट इन दिस मैनर. So this is something that you can actually end up doing. And I know some of you will end up asking me in terms of ये notes कहाँ है, कैसा है, उस पे बाद में आते, we'll come to that later. But coming back, so we discussed 3 points, in fact 4 points, 3 points. So one is all subjects books पहले से decide कर लो कौन सी books में से पढ़ना है, subject wise books रख दो ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको books ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. Second is concepts के लिए summary notes, के अच्छा अगर PGBP है तो उसके provisions की notes. And when I say summary notes, it does not mean that आप खुद की notes बनाने जाओ. When I say handwritten, they may not be handwritten. They may be from, let's say, a summary book of a faculty, or they may be from a module which you've cross-referenced. And the next is notes for concepts of sums, because every sum, and especially I struggled in costing and inter. There were like so many sums in every chapter, and it ended up taking me a lot of time. तो सारे तो आप करोगे नहीं, एंड आप सारे नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज अच्छा वो एक एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछ लिया तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए ये फिर कंसेप्ट नोट्स आपको काफी हेल्प करेगी, वो आप चैप्टर वाइज बना. नेक्स्ट इज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सो फार एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, बेसिकली लिस्ट ऑफ सम फॉर लास्ट ईयर रिवीजन. व्हाट आई हैव डन इज बैक इन माय इंटर एज वेल एज इन माय सीए फाइनल, दैट एवरी चैप्टर, लेट्स से लाइक आई सेड कॉस्टिंग का कॉस्टिंग वाला सम है, तो उसमें जो अब नोट्स वाले सम्स हटा के जो मैंने 3 सम पीजीबी में बोले थे, लेट्स से लेबर कॉस्टिंग में 10 अलग-अलग टाइप के सम्स है, तो वो अलग-अलग टाइप के सम्स की एक लिस्ट बना दो कि these are the 10 sums that I want to cover. Question, let's say question 3 of module, let's say illustration 3 of module, and dash page number 4.119 of module. तो ये लिस्ट आ गई आपके पास 10 क्वेश्चंस की, एंड वो 10 क्वेश्चंस के बाद उसका कैटेगराइजेशन कर लो, ABC कैटेगराइजेशन इन टर्म्स ऑफ टफनेस एंड इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड you also write the page number. So basically now सिर्फ आपको पता है मेरे को 10 ही सम करने हैं, ये पेज नंबर्स पे दिए हुए हैं और ये वाला टफनेस है. अब होगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सी कैटेगरी वाले छोड़ भी दोगे तो चलेगा, आप सिर्फ AB वाले कवर करोगे, और भी कम टाइम है तो आप सिर्फ A वाले कवर करोगे, एंड यू नो द पेज नंबर्स, तो आपका वो अगेन सम ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं है.
यहाँ पे भी थोड़ा और हैक ये है कि लेट्स से यू नो द फर्स्ट सम इज क्वेश्चन 3 एंड द सेकंड सम इज लेट्स से क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 7 पेज नंबर 4.123 ऐसा करके लिख दिया, तो आपको सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आप खोल सकते। This is something that you should do. So ensure cross-referencing in the list that you've prepared. Write down the question numbers, write down the categorization, and write down the page number. And this is something you should do right now because this is the last. So this is the most important time, and this is why this is the right time to have this session. तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें ये तो चलो लिस्ट हो, अब लिस्ट के में भी आप एबीसी कैटेगराइजेशन कर लोगे ना, फ्यू सम्स आर सच जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी लिख के करने पड़े, व्हेन आई से लिख के करने पड़ेंगे, यू कैन नॉट जस्ट ऑडिट द सम्स, यू विल हैव टू एक्चुअली सिट एंड कैलकुलेट, उसकी टफनेस लेवल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे you can actually write very important right before exam. So what I used to do is, let's say मैं W कर देता था right करके, so W and then circle, so sum के आगे W and circle कर दिया, या लिस्ट में नंबर के आगे W and circle कर दिया, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले I have to write and practice this sum, वो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है। एंड बाकी सारे जो सम्स है वो जो W टाइप के नहीं है, उसमें फिर आप ABC सिंपल कैटेगराइजेशन कर लो, वो सम्स आपको ऑडिट करने एग्जाम के एक दिन पहले। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने एसएफएम थियरी लिखा है, इट कुड बी कॉस्टिंग थियरी, इट कुड बी एफएम थियरी फॉर इंटर, तो उसका जो थियरी पोर्शन है वो आप सेपरेटली कवर करो, बिकॉज फॉर श्योर इंटर में कॉस्टिंग में सेपरेटली थियरी क्वेश्चन आता है, इवन एफएम में आता है, अकाउंट्स में ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थियरी आएगी, सीए फाइनल में एसएफएम में थियरी क्वेश्चन आते हैं, तो आप थियरी के लिए यू सेपरेटली बजट टाइम, उसके लिए अगर अलग से नोट्स बनाइए वेल एंड गुड, अभी बना सकते हो वेल एंड गुड, नहीं भी बनाइए नो प्रॉब्लम, अगेन द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर थियरी इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग डाउन कौन से क्वेश्चंस है कौन से चैप्टर में। यहाँ पे दो अप्रोचेस है, या तो आप हर चैप्टर के साथ साथ उसके थियरी क्वेश्चंस करते जाओ, या तो फिर सारे थियरी क्वेश्चंस लास्ट में या कभी भी सेपरेटली टाइम बजट कर 1 या 2 घंटे में सारे थियरी क्वेश्चंस कर लो। आई फॉलो द लेटर अप्रोच बिकॉज आई फाउंड इट टू बी स्लाइटली बेटर। उसकी एक लिस्ट बना दो, कौन से क्वेश्चंस है, कौन से पेज पे है, क्या टफनेस लेवल है, क्या इंपॉर्टेंस लेवल आपको लग रहा है, कितने पूछने के चांसेस आपको लग रहे हैं। वैसे तो नो वन कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट इंस्टीट्यूट पेपर्स, बट यू कैन ऑलवेज गो बाय योर इंट्यूशन। Next is in terms of theory subjects about law audit, in fact specifically law audit and let's say EIS SM for inter. Now what happens is हम लोग को ना ये बड़ी गंदी आदत लग रखी है सारे सीए स्टूडेंट्स को कि हम लोग क्वेश्चन बैंक्स, लाइक वी प्रिफर क्वेश्चन बैंक्स, रिपोजिटरी ऑफ आरटीपी एमटीपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वी ट्राई टू अवॉइड मॉड्यूल या वी ट्राई टू अवॉइड कंसेप्ट। नाउ दिस, एंड ठीक है राइट और रॉन्ग पे तो नहीं जाते ना, what happens over here is for those who also read concepts from the book, होगा क्या, आप concepts भी पढ़ रहे हो and आप उसी concept का क्वेश्चन आंसर भी पढ़ रहे हो, so it's a duplication of time over you, and वो 1.5 दिन में there is no scope for duplication because there is no time for you to waste, you cannot afford any time। तो यहाँ पे just make sure जो भी concepts आप concept book में से cover कर रहे हो, now when I say concept book it could be your handwritten notes, it could be a faculty's book or it could be institute का module, whatever book you have used till now। I'm not asking you to change any resource, just mind it। आपने जो भी रिसोर्स यूज किया है वहां पे से डिसाइड कर लो कि कोई भी एक कंसेप्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस या डिस्क्वालिफिकेशंस का आंसर है, तो वो अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स में से ऑलरेडी कवर कर लिया तो उसको कंसेप्ट में से जस्ट कैंसिल इट आउट, डोंट रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम लेट्स से द कंसेप्ट्स, वहां पे what you can do is you can let's say just write that is an important question being asked in MTP and RTP multiple times, फिर आप क्वेश्चन बैंक में से सेपरेटली कवर मत करो। So you have to make sure you avoid this overlap between concepts and question or a question book, and this is something again you have to do right now। जो कैंसिलिंग वाला पार्ट है that should be no duplication, वो कैंसिलिंग वाला पार्ट अभी करना है, आपको किसमें से कैंसिल करना है, that is a call that you will have to take, कंसेप्ट बुक में से करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, but you will have to cancel it out for sure। क्लियर रेफरेंसिंग अगेन लाइक आई सेड कि आप क्वेश्चन के ऊपर लिख दो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी ऑर्डर है उसके ऊपर लिख दो कि दिस इज लेट्स से वेरी इंपॉर्टेंट या फिर नॉट इंपॉर्टेंट व्हाटएवर यू फील, सो वहां पे लिख दो रिसेंटली टेस्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी है, या ये मैं भूल जाता हूं ये लिख दो कि दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आई कीप फॉरगेटिंग। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड क्लियरली रेफरेंस, एंड इवन इन द क्वेश्चन आंसर बुक बाय द वे, सो लेट्स से यू क्वेश्चन आंसर बुक में लेट्स से देयर आर 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आप 42 क्वेश्चंस आप कवर कर चुके हो ऑलरेडी मॉड्यूल में, लाइक 8 क्वेश्चंस व्हिच आर न्यू इन दैट, तो 8 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 1 होगा, एक क्वेश्चन 11 होगा, तो क्वेश्चन 1 के बाद आप लिख दो क्वेश्चन 11 उसका पेज नंबर, एंड सीधा जाके आप क्वेश्चन 11 से रीड कर लो, एंड देन उसके बाद लेट्स से क्वेश्चन 20 है तो क्वेश्चन 20 सो ऑन एंड सो। सो अगेन यहाँ पे
you'll have to do that your reference. Third is in terms of mnemonics. Now, a lot of you would have used this approach. If you've not at this point in time, I wouldn't really suggest, think about making mnemonics. You can do so very selectively, by the way. For few answers जो याद नहीं ही रह रहे हैं उसके लिए mnemonics बना सकते हो. Mnemonics basically is nothing but, let's say, first letter of every point. Yeah, let's say one कोई भी आप word उठा लो, 5 points का आंसर है, उसमें से कोई भी एक word उठा के उसका एक लेटर उठा लो. For example, this one faculty जिसके lectures मैंने देखे थे had said HP man. Now, what is HP man? HP man is essentially those products जिसपे GST नहीं लगता है. So it's high speed diesel, petroleum products, those that are not in the ambit of GST so far. Motor spirit, air turbine fuel, natural gas. So this is like HP man. वो आज तक भी मेरे को याद. So you can make such mnemonics, but at this point don't go on to make a lot of mnemonics because आप भूल जाओगे कौन सा किसका. And secondly, do so selectively, like for very important answers versus जो आपको याद नहीं रह रहे हैं. एंड होता क्या है ना काफी बार, एंड स्पेशली ये मेरे साथ ऑडिट में हो रहा कि आई एंडेड अप मेकिंग सो मेनी निमोनिक्स. एंड प्रॉब्लम क्या होता है ना, अब जैसे असर्शन या फिर there are a lot of words in audit which keep repeating in almost every particular answer that you end up covering. तो अब जब आप निमोनिक्स देखोगे यू विल कीप गेटिंग कंफ्यूज कि निमोनिक्स इस आंसर का था या उस आंसर का. आपको निमोनिक्स याद है, आपको पॉइंट्स भी याद है, पर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है. आंसर याद है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया लेकिन आपको ये नहीं पता इस क्वेश्चन का क्या निमोनिक्स है. मेरे को तो दो याद है. तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड स्पेशली ऑडिट में होता है बिकॉज़ टर्मिनोलॉजीज आर सिमिलर. तो सॉल्यूशन फॉर दैट इज व्हाट यू कैन डू इज एक नोटबुक ले लो. उस नोटबुक में सिर्फ सारे निमोनिक्स की लिस्ट बना लो. क्वेश्चन लिखो कि लेट्स से द क्वेश्चन इज डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी ऑडिटर, या फिर क्वेश्चन इज लेट्स से स्पेशल स्टेट्स अंडर जीएसटी, एंड उसके साइड में उसके निमोनिक्स लिखो. तो आपकी वो लिस्ट होगी तो आपको याद रहेगा अच्छा हाँ ये क्वेश्चन था और इसके बाद में. काफी बार प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप क्वेश्चन, एंड सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ऑडिट में. सो किसी ने लॉ एंड ऑडिट के लिए ट्रिप्स एंड ट्रिक्स पूछा. सो इज वन टिप एंड ट्रिक बाय द वे कि हम लोग ना इतना आंसर लर्न करने में फोकस हो जाते हैं स्पेशली इन ऑडिट कि हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं. So when you learn your answer ना कहीं वो trick से not just remember the answer but also remember and try to connect it to the question. So कुछ एक logic बना दे, even if it is a फालतू logic, it may not have any logic at all, but just for your memory you can somehow relate the answer to the question and make sure you remember the question and answer. वरना एग्जाम में क्वेश्चन देख के भी आपको आंसर याद नहीं है. So this is one thing that you should also do. Now, in terms of MCQ books, I know CA Final and CA Inter both have MCQ booklets, and these are very good resources that ICI has provided. But exam के 1.5 दिन पहले आपको आगे के MCQ या पीछे की 30 केस स्टडी नहीं करने बैठ सकते. You will not have enough time on earth to do that. So अब अच्छा आप बोलोगे सिर्फ एक कैटेगरी के मैं MCQs करूं, मेरे को तो पूरी बुक ही एक कैटेगरी लगी है. So you will end up still doing what 40-50 MCQs इतना भी आपके पास टाइम. So what I had done, and this is what I will suggest. See, again, depending on कितना आपके पास time है versus not, this is what I had done. So मैंने, this is by the way for CA Final because मैं CA Final में MCQ इसलिए इंटर में नहीं. So what I did is I made these MCQ notes. जब मैं MCQ solve कर रहा था कि let's say any internal control labs, then internal audit or internal audit करवाओ. Then let's say if you've not received the declaration अगर under 164(2) जो डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन रहता है, then report the matter. This is obviously audit. तो ये सारे जो अलग-अलग MCQs रहेंगे, I just wrote them down. अच्छा, if interest is accrued but not it is not included in deposits, etc., whatever. So what happens is now this is 8 page का notes, 8 pages है. Now ये 8 pages पढ़ने में it will not take me more than simple bullet points में लिखा हुआ है. It will not take me more than 20 minutes to go through these 8 pages फटाफट. बट आप सोचो अगर मैं 50-60 पेज अक्रॉस द एमसीक्यू बुकलेट देखने जाऊंगा, I will end up spending let's say at least 1.5 hours to go through those 50-60 MCQs. क्योंकि पेज पलटने में ही उतना टाइम लगता है. तो सबसे ज्यादा बात तो ये है कि इन द लास्ट 1.5 days आपको पेज कम पलटने जितना हो सके, एंड उसके लिए ये सब हैक्स. इसमें कोई नई चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है. इट्स मोर लाइक these simple hacks which will end up saving a lot of your time. So yeah, that's a very good question that's come up in the chat box and I'll answer that. But first I'll just quickly recap what all I've covered so far. One is, like I said, subject wise keep all our books weekly so that you don't spend time in searching. Practical subjects के लिए chapter wise you can have separate note for concept.
If you feel you don't have it already and you don't have the time to make them, don't worry at all. मेरे पास इंटर में ऐसी कोई नोट्स नहीं थी, मैंने सीए फाइनल में ही बनाई, एंड वो भी नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट, सिलेक्टिवली वेयरएवर आई फिट। तो आप क्या करो, आपकी जो भी मॉड्यूल है या जहां से भी आपने पढ़ा है उसमें ही क्रॉस रेफरेंसिंग कर लो, पेज नंबर्स लिख दो, टॉपिक्स लिख दो, जस्ट एटलीस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कांसेप्ट दैट यू वांट। In terms of chapters which have a lot of sums, and almost all chapters in practical subjects have a lot of sums because it is a CA course obviously. So उसमें से काफी सारे repetitive होंगे except for that one adjustment. तो आप क्या करो, basically you just take a separate piece of paper, take a separate notebook. By the way, I had a separate notebook for each subject for all of these things. मतलब ऐसी सारी चीजें लिखने के लिए आपके पास क्लास बुक्स तो रहेगी, पर मैं अलग से बुक बना दी फॉर राइटिंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह रहेगा, just write it down separately, and then you have to cover just those unique sums जो जिसमें majority cover हो जाता है। PGP is the best example क्योंकि उसमें सारे टाइप के sums मतलब broadly let's say 2-3 टाइप ही होंगे, and उसमें खाली adjustments का difference और adjustments list down separately. Make a list of sums, and this is by the way the most important by far. For every chapter make a list of let's say 10, 15, 20 sums. 20 तो ज्यादा हो गए, but basically between 10 to 15 sums that you want to cover depending on the size of the chapter. Write the category against each chapter, write the page number. So cross referencing is essentially the page number of let's say the module or your class book and your notebook जिसमें आपने उसका solution लिख रखा है. Write down if there is a sum that you want to solve the day of exam, तो उसके बाजू में मैं W symbol बना लेता था, आप अपने हिसाब से कोई भी symbol बना सकते हो. And for other sums you can have this categorization. And हाँ, one more thing by the way, the one thing that I did not cover is few sums ऐसे थे कि जो मेरे को लगा था अगर टाइम मिलेगा तो कवर कर लेना चाहिए एग्जाम के पहले, बट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, तो मैं ना वहां पे कैन स्किप लिख देता था बाजू। आप कैन स्किप का शॉर्ट फॉर्म लिख दो CS, तो आपको एटलीस्ट यू विल नो व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम। आप सोचो कि अरे मैं कौन सा स्किप करूं, वो अभी से डिसाइड कर लो, अगर स्किप करना पड़ा तो मैं क्या स्किप करूं, कौन से सम्स का यूनिट, नॉट अ टॉपिक। It is never suggestible to skip a topic altogether unless obviously in exceptional circumstances which I'll come at. And theory portion so far as practical subjects are concerned, you should ideally cover it separately. And उसमें चलो आप even if you want to cover chapter wise that's fine, but basically have it again clearly referenced. You decide कौन से questions आपको cover करने हैं। एग्जाम के एक दिन पहले मत सोचो कि अरे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, अभी से सोच लो आपको जो भी सोचना है। एग्जाम की 1.5 दिन पहले आपका सिर्फ काम पढ़ने का है, सोचने का नहीं है, वो काम पहले से अभी से करते रहते। इन टर्म्स ऑफ थियरी सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन बैंक एंड कंसेप्ट्स के बीच में देयर शुड बी नो ओवरलैप, बोथ शुड बी यूनिक। मेरे हिसाब से द आइडियल अप्रोच इज कवर कंसेप्ट बुक फर्स्ट, एंड दोस क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द कंसेप्ट बुक फॉर व्हाटसोएवर रीजन, या फिर क्वेश्चन बैंक में अच्छे से दिए हुए, देन गो फॉर द क्वेश्चन बैंक फॉर दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड एंड अप covering, unless obviously you followed a different approach. अब तक जो फॉलो किया है उसको कंटिन्यू करना, बट ओवरलैप बेसिकली अवॉइड करना। यहाँ पे भी अगेन क्लियर रेफरेंस कर दो, इंपॉर्टेंट है, कैटेगराइजेशन कर लो, निमोनिक्स लिखना है निमोनिक्स लिख दो, एंड सारे निमोनिक्स को सेपरेटली लिस्ट डाउन कर लो ताकि आप ये ना भूल जाओ कि निमोनिक्स था किस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई सजेस्टेड एमसीक्यू नोट्स। यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, अब 1 महीना ही एग्जाम को, हाउ डू यू एंड अप मेकिंग एमसीक्यू नोट्स इफ यू नॉट ऑलरेडी मेड? नाउ वन हैक ओवर हियर इज के 4 अच्छे दोस्त ढूंढ लो, एक सब्जेक्ट उठा लो, या तो फिर हमने, एंड दिस व्हाट एक्चुअली आई हैड डन, लेट्स से ऑडिट की नोट्स मैंने बनाई वर्सेस लॉ की मेरे फ्रेंड ने बनाई। ये भी कर सकते हो आपके ऑडिट में 1 to 40 एमसीक्यूज मैं कवर कर रहा हूँ, 40 to 80 तू कवर कर ले, 80 to 100 तीसरा बंदा कवर कर लेगा, एंड देन नोट्स आप एक दूसरे के साथ शेयर करो। दिस शेयरिंग थिंग विल हेल्प यू अ लॉट। And now coming to the question in terms of whether fast track revision lectures or revision videos are helpful. So इसका कोई सिंगल वर्ड आंसर नहीं है, बट आई टेल यू माय ओपिनियन ऑन इट, एंड द आंसर विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई फील द शॉर्ट आंसर इज नो, यू शुड नॉट रियली रेफर टू दी फास्ट ट्रैक वीडियोस और रिवीजन लेक्चर्स। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या होता है ना, फैकल्टी का रिवीजन होता है, आपका नहीं होता है। आप अगर बैठ के सुन रहे हो आपको लगता है मजा आ रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को याद तो रहेगा नहीं अगर मैं सुनता हूँ। अब यही सोचो मैं इतना सारा अब तक बोल गया, आप चीजें समझ गए, बट डू यू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई सेड? ऑब्वियसली। So what is important is आपको वो कंसेप्ट समझने के लिए अगर रिवीजन लेक्चर, फास्ट ट्रैक लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हो। So the ideal time to watch those revision fast track lectures is let's say 1 to 2-3 months before exam. एग्जाम के एक दिन पहले फास्ट ट्रैक लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है। फैकल्टी को सब याद है, वो रिवीजन लेक्चर करवा रहे थे, लेकिन आपके वो लेट्स से आपने ऑडिट का कोई हाइपोथेटिकली चैप्टर उठा लो, कोई भी कंपनी ऑडिट, 1 घंटे का रिवीजन लेक्चर, आपको लगेगा मैं 1 घंटे में देख के खत्म कर लूं, खुद पढ़ने जाऊंगा मेरे को 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आप 2 घंटे भी लगा के एटलीस्ट आपको याद तो रहेगा।
लेकिन वो 1 घंटे का जो लेक्चर है आप बैठ के देख रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एज वी हैव लॉस्ट दैट कंसंट्रेशन पावर. इंसान का डिस्ट्रैक्ट होना बहुत इजी है. इट इज एक्चुअली अ थियरी, मतलब इट इज एक्चुअली अ स्टडी दैट बियॉन्ड 8 सेकेंड्स यू कैन नॉट फोकस. सो इंसान का जो है कंसंट्रेशन सिर्फ 8 सेकेंड्स तक ही रहता है. एंड आप इसी सेशन में सोच लो, हैव यू heard each and every word that I've said so far in the last 15-20 minutes? The last half an hour? Obviously not. So my short answer is no, but for few concepts it is helpful. I'll tell you what. And by the way, for inter my short answer is no. But for CA final, what had happened is, let's say the capital gains for CA final is not very tested in exams. या salary या house property. CA final में salary, house property, capital gain so far in my opinion is not that important, is not that tested. अब होता क्या है, लेकिन ये बड़े बड़े चैप्टर्स है, सैलरी इतना बड़ा है, कैपिटल गेन इतना बड़ा है. इंटर में बाय द वे ऑल ऑफ दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फाइनल के पर्सपेक्टिव से तो एंड मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो इंटर वाले भी सुन तो सकते ही. नॉट हैपेंस इज कि ये वाले चैप्टर्स में मैं अगर टाइम स्पेंड करने जाऊंगा ना, तो फिर तो मेरे को एक दिन सिर्फ कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी करने में लग जाए. बट आई कैन नॉट स्पेंड दैट टाइम इफ इट इज सीए फाइनल, राइट? सो व्हाट नाउ आई कैन डू इज, अच्छा मैं रिवीजन लेक्चर देख के एटलीस्ट मैं कंसेप्ट समझ लूं, ताकि अगर एग्जाम में टेस्ट भी कर लिया मैं 100% राइट नहीं हुआ, एटलीस्ट 50-60% राइट करके मैं 5-6 मार्क उठा लूंगा अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो. दैट वाज माय अप्रोच फॉर चैप्टर्स लाइक दीस, जहां पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, या फिर दोस दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो देयर कुड बी फ्यू चैप्टर्स जो आपको 100% पता है कि यू नो ये फैकल्टी का रिवीजन लेक्चर देखने से मेरा अच्छे से रिवीजन होगा एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरे को याद रहेगा. अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है तो व्हाई नॉट, यू शुड वॉच. बट अदरवाइज इन माय एक्सपीरियंस मेरे को भी याद, फैकल्टी के बोलने से मेरे को याद नहीं रहा. प्लस टू ऑल दोज आई हैव स्पोकन, ऑल ऑफ देम एग्री टू मी सेइंग फैकल्टी का रिवीजन होता है, आपका तो नहीं होगा. सो माय शॉर्ट आंसर इज नो, आई विल नॉट. Going to the next slide, and I'll have to be slightly quicker now. So yeah, the crux of it all is failing to plan is planning to fail. So 1.5 दिन में आपका कोर्स सभी ही खत्म होगा if you planned well in advance. Now what plan? So 2-3 things. One is you have to list down clear priority of chapters. Now the reason I say so is, अगर आपके पास टाइम कम पड़ा, and by the way most of the times आपके पास टाइम कम पड़ेगा, and अगर in the worst case scenario आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है, then you don't end up skipping the company. So I don't end up skipping company audit. अगर मेरे पास टाइम कम है तो लॉ में I will not end up skipping, let's say, unnegotiable instruments, for example. But I might want to skip the interpretation of statutes, which is not would have changed in the time I have given inter. So take it with a pinch of salt. So अगर आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो क्या छोड़ोगे वो सोच के रखो. If at all, छोड़ना तो नहीं है, you don't have to leave anything, but still, so you still have to have this clear priority in your head कि this is important. Now you have to plan the day 1.5 days before exam. You will have total 20 to 21 hours. वैसे 20 to 21 के लिए आपको प्लान करना है आइडियली 20-21 घंटे से ज्यादा ही. अब कैसे? आप प्रीवियस एग्जाम देकर आए 5 बजे तक एग्जाम, you come home let's say by 6 o'clock, and let's say you can start studying by let's say 6:30. ठीक है, 1.5 घंटे का गैप टू बी ऑनेस्ट इनफ होता है. सो उस दिन 6:30 से लेके you can end up studying, if you end up studying for like let's say 3 hours, 6:30 to 9:30, आप खाना वाना खा के 10-10:30 तक सो. Next day, so there's like 3 hours on that day. Next day you get up at 6, you can sleep at let's say at 10 o'clock, which means पूरे दिन में you have 12 plus 4 16 hours. अब आप 16 घंटे में से नहाना धोना खाना बीच में सो भी जाओ, उसके आप कितने 4 घंटे निकालो तो भी आपके पास 12 घंटे तो बचेंगे. आइडियली वैसे ये टाइम ज्यादा रहता है, लाइक यू विल एंड अप ऑब्वियसली स्टडीइंग मोर. 4 घंटे आप वेस्ट नहीं करोगे, बट स्टिल 12 hours, so 6 and 6 there. And on the day of exam, so let's say 1 बजे का एग्जाम है, sorry 2 बजे का एग्जाम है, you leave by 1 o'clock, and let's say you get up by 6, so 6 till 1 7 hours हुआ, 1 घंटा आप निकालो नहाने धोने नाश्ते करके, which means you still have 6 hours. So if you total this, it is around 20 to 21 hours. So you have 20 to 21 hours and you have to plan accordingly. Now there's a difference between morning and night person, and I'm a morning person, so I'll just tell you how I had planned, and this is something that you actually have to sit and do in terms of planning. So this was my audit 1.5 day plan for CA final. I hope you can see the screen.
So what I had thought of is, and this was my philosophy, and again take it with a pinch of salt. I am a morning student, so I had accordingly planned. So what happened is, यहाँ पे कहीं ना कहीं मोटा मोटी 3 सवा 3 घंटे, ठीक है, और इसमें से वैसे 3.25 घंटे है, बट इधर मैंने 3 घंटे लिख रखा है. सो 15 मिनट्स अगर आपका वेस्ट भी हो रहा है, तो मैं ना ये करता था कि आई प्रिफर टू wake up early and study more important topics in the morning versus एग्जाम से ऐसे भी आए होते थके हुए होते, तो आई वुड नॉट प्रिफर टू टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ये वाले जो चैप्टर्स हैं सीए इंटर वाले, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट आई एम सेइंग ओवर हियर, डोंट गो ऑन द टॉपिक के नेम्स. सो व्हाट आई डिड इज डे 1 पे आई हैड केप्ट ऑल द इजी टॉपिक्स जिसमें इतना मेंटली लोड लेना नहीं पड़े. वेरी वेरी इजी वंस यू कैन कंसीडर फॉर डे 1. वर्सेस जैसे जीसीए है फॉर जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट है लॉ में, दैट इज वेरी इजी. So general clauses act you may want to cover on day 1 when you are not so fresh, but at the same time that topic could be tested in exam. So day 1 पे 3 घंटे में, and here is the MCQ notes also. तो MCQ notes के लिए मैंने टाइम प्रोविजन दे दिया था 30 मिनट्स. तो वो वाले टॉपिक्स मैंने फर्स्ट डे इवनिंग में कवर कर लिए. दोस टॉपिक्स दैट आर let's say not don't require the most concentration from my side, those that are easy or those I am comfortable with. Next day, first half, like in the morning hours, I will prefer to take all those topics that are extremely important from an exam perspective when I'm fresh. And again, this is for a morning person. I'll let you know how this is for a night person. And यहाँ पे one thing that you can see is मैंने ये 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा ऐसे प्रोविजन बना रखा है. So जो मैंने 20-21 घंटे बोले ना, वो इस एंगल से. So 3 hours, 8 hours, ये सब total 20 hours होना चाहिए. So this is how you have to plan, and you have to divide those 20 hours within those chapters that you have. And realistically divided. यहाँ पे मैंने बफर भी डाल रखा है. So if you see buffer of half an hour, plus यहाँ पे 1 घंटे का तो ब्रेक भी डाल रखा है, डिनर ब्रेक भी डाल रखा है. And then again थर्ड डे मॉर्निंग जो है, अगेन एग्जाम के दिन सुबह कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा एग्जाम के दिन सुबह पढ़ के जाऊंगा तभी मेरे को याद है. So it is helpful to then take those topics. So यहाँ पे the crux of it all is मोटा मोटी 3 hours on the first day. नेक्स्ट डे पे यहाँ पे बाय द वे 15 आवर्स है, बट दिस इज टू मच, इतना होता नहीं है. इट्स मोर लाइक सीए फाइनल का ऑडिट इज वेरी बिग, इसलिए इसके लिए इसमें टाइम लग जाता है, बट अदरवाइज 12 to 14 आवर्स ऑन द डे ऑफ हॉलीडे. एंड थर्ड डे पे मोटा मोटी 6-7 आवर्स. सो इन टोटल यू हैव टू प्लान फॉर लाइक अबाउट 20 odd hours. And yeah, coming to morning versus night person. By the way, am I clearly audible to you guys? Because I think I'm getting stuck a little. Could someone confirm on the chat box? Perfect. Thank you. Yeah. So let's say I was talking about myself, who is the morning person. So मैंने जो previous exam के दिन आके 3 घंटे पढ़ाई की. Next day morning I will study for 6 hours. Evening I will study for 6 hours. And then on the day of exam I'll study for 6 hours. It's like 21 hours into. Now if you're a night person, like prefer to study for longer hours, late, get up late, तो आप एग्जाम के दिन आके 6 घंटे पढ़ लो. Like let's say from 6:30 till you study until 1:30, like including an hour's break in between. 1:30 बजे आप सो जाओ. You get up at what, let's say 9 o'clock or something, and then you can study for like 3 hours दोपहर तक, and then you can again study the next day. You start again 3 o'clock के आसपास you start studying. You study until 1 o'clock, again 1 hour dinner break भी मैंने किया. And then next day again you can like get up at 10 o'clock, and then you can study for you can get up at let's say 8-9 o'clock, and then you can study until 12-1 o'clock. So for night person this will change. For a night person वो important topics पहले दिन ही ले लेगा, versus मेरे को लगता है कि नहीं, पहले दिन I am not very efficient, so I would much rather prefer taking those topics the second day. लेकिन one thing for sure is on the day of the exam take the extremely most important topics, because obviously वो वाले topics are those that आपको ज्यादा याद रहेंगे. लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, ये ना हो जाए कि आप जो टॉपिक्स लास्ट डे के लिए रख रहे हो वो छूट जाए, तो ये करना मत. इसलिए मैंने आपको प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स की बात करी. सो आपको सोचना है कि अच्छा प्रीवियस डे पे अगर मेरा कुछ छूट गया तो उसको छोड़ के पहले ये जो मॉर्निंग ऑफ एग्जाम वाले चैप्टर्स है वो कवर करो, क्योंकि दीज आर मोर इंपॉर्टेंट. सो हैविंग सेड दैट, यू हैव टू डिसाइड इफ ए मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन, बट द क्रक्स ऑफ इट ऑल इज 20-21 घंटे की प्लानिंग करो.
डिवाइड योर टाइम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मत करो, इतना मैक्रो लेवल पे मत जाओ, सॉरी इतना माइक्रो लेवल पे मत जाओ, फॉलो होता भी नहीं था, बट यू विल हैव टू एटलीस्ट एंड अप प्लानिंग. नाउ इफ यू सी दिस, यहाँ पे ना मैंने रिविजन के लिए टाइम रखा हुआ 90 मिनट्स. एंड समवन हु आस्क्ड मी ऑडिट लॉ के लिए व्हाट इज द हैक, दिस इज अ हैक that you will have to end up spending time, something that I've written in the second last bullet here also. You'll end up, you should end up spending some time, which is let's say between 1.5 hours to again revise the important topics or the important concepts. Audit ऐसा सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि even if you studied the day before, शायद नेक्स्ट डे आप भूल जाओ. एंड ये सबके साथ होता है, बाय द वे, यू आर नॉट द ओनली वन. एंड आई थिंक अब आपको ये सुन के खुशी हो रही होगी कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ जो भूल जाता हूँ. So लास्ट के 1-1.5-2 घंटे में यू शुड एंड अप रिवाइजिंग लेट्स से एमटीपी या आरटीपी, नॉट एमटीपी आरटीपी सब कुछ, बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू वुड हैव मार्क्ड. If there are any tough sums in a particular practical subject, or if there are any important topics so far as a theory subject is concerned. So 1 से 1.5 घंटा you should ideally quickly flip through pages and just recall mnemonics. आप रिवाइज कर लो, important questions रिवाइज कर लो. 1 से 1.5 घंटा आपको एग्जाम के दिन सुबह सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है. रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इवन इफ आपका, मैं तो ये मानता हूँ ऑनेस्टली, एक भी चैप्टर भी छूट रहा है ना, चैप्टर छोड़ के पहले रिवीजन करो, क्योंकि 9 चैप्टर का रिवीजन करो, 9 सही लिख के आओगे इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एक चैप्टर को पढ़ के जाओगे और वो एक याद रह गया, 9 भूल. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बफर्स आई टोल्ड यू, 20-21 घंटे में 1-1.5 घंटे का तो बफर ही बिल्ड कर लेना, which means you have to plan for 18.5 hours net. 18.5, चलो 19 hours पकड़ लो, net 19 hours को आप सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स में जस्ट डिवाइड इट. नीड फॉर ब्रेक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू सी, आई हैड केप्ट सफिशिएंट ब्रेक्स. मतलब मैंने तो दोपहर को, I wouldn't call it phobia, but for me science was like audit. So science in 10th was like audit in CA, whether CA inter or CA. So I was like, that's the kind of content. Now what happened is, again subject quantum बहुत था वगैरह वगैरह. Now what happened is, because I did not sleep enough the first day itself. मतलब पहली एग्जाम के बाद ही आके मैंने, that night I stretched until 2 o'clock because डरा हुआ था ये वो. And then next day what happened is, because of lack of sleep, I just couldn't study. मतलब मैं मुख के सामने बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ जान नहीं. And this happened for like 3-4-5 hours. I wasted a lot of time, and then I realized I have like nothing doing. Break ले लो. I just went and slept for like 2 hours, and then once I woke up, I was like extremely fresh. So this is one thing that, importance of these breaks cannot be emphasized enough, to be very honest. Because unless you end up taking these breaks, now whatever you study will not really be retained in your head. So don't think कि अरे मैं मतलब 2 घंटा ही सोऊंगा, नहीं सोऊंगा तो चलेगा. It is important. So breaks are important, but then end up making sure that you don't end up wasting time. Like अगर खाने का ब्रेक है तो take time to eat, 20-30 मिनट ले लो, but 1 घंटा खाने के लिए ideally नहीं चाहिए. Obviously, why would you take one? This is something, the last point is something that is extremely important in terms of you pre-deciding what are the materials that you want to cover. Like I said, पहले से डिसाइड कर लो किस टॉपिक में से क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, और वो मटेरियल्स साइड में करके रखो. Which chapters to cover. Now, ideally, like I said, it is not advisable for me to suggest you or for you guys to leave any chapter at all, because anything and everything could be tested in CA exams. But having said that, there are always a few chapters which are more important than the others, and you will know which chapters are more important versus the others which are less important. So in CA final law, for example, there is a chapter called winding up, जिसमें से एक आध क्वेश्चन टेस्ट होता है, वो भी हर एग्जाम में टेस्ट नहीं होता है. But winding up chapter is extremely big. If I want to study the day before exam, it will like at least take me 2 hours. And I cannot afford to give 2 hours for a question जो शायद आए शायद ना आए. अगर आ भी गया तो हो सकता है मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन. So what I did for this chapter is I pre-decided कि मेरा वैसे भी लॉ 20 घंटे में खत्म नहीं होने वाला है. तो ये चैप्टर के मैं सिर्फ बैक एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करूंगा, मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा. ये मैंने पहले से डिसाइड करके रख दिया था, ये चैप्टर में एग्जाम में छोड़. लकीली फॉर मी जो क्वेश्चन पूछा वो बैक एक्सरसाइज में से पूछा. हो सकता है बैक एक्सरसाइज में से नहीं पूछा हो, तो देयर इज ऑलवेज दिस ऑप्शन, आप एक क्वेश्चन तो एग्जाम में वैसे भी छोड़ सकते हो. और नहीं भी छूटा तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है, आपको 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, ट्राई टू गेट 96 का 80% मार्क्स. सो अगर कुछ छोड़ना पड़ रहा है while again repeating, that is not advisable.
कुछ छोड़ना है लास्ट मिनट मत डिसाइड करो, पहले से डिसाइड करो। आप ये 18-19 घंटे के लिए प्लानिंग करो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकली मेरा कुछ छूटेगा। तो अगर डिसाइड करो पहले से छोटे, हुआ क्या, जब लास्ट मोमेंट पे अगर आपका कुछ छूट रहा है तो आप पैनिक हो जाओगे। ये फाइंडिंग अप मेरा छूटना तो इधर वेस्ट, मैं लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करता हूं कि मैं छोड़ रहा हूं, दैट आई बिकम पैनिक, दैट दिस इज समथिंग आई हैड नॉट प्री डिसाइडेड। अभी सडनली मेरे को लग रहा है कि मैं छूट रहा हूं, तो मेरे को एक फोमो आ रही है, एग्जाम में पूछ लिया तो मैं एग्जाम में डर के माहौल से जाऊं, एंड वो डर शायद फिर फाइंडिंग अप आए चाहे ना आए, वो डर क्योंकि मेरे दिमाग में रहेगा, कुछ ना कुछ मैं गलतियां कर कर आऊं। सो दिस इज अ फैक्ट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड मेक श्योर। अगर कुछ छोड़ना है तो अभी से डिसाइड कर लो, और डिसाइड किया नहीं छोड़ना है तो फिर मत ही छोड़ना कुछ भी। एंड इंटर वालों को तो जरूरत नहीं है छोड़ने की कुछ भी, फाइनल में फिर भी थोड़ा सा क्वांटम स्लाइड ज्यादा हो जाता है, इसलिए फिर भी जरूरत पड़ती है इन सब्जेक्ट्स लाइक लॉ ऑडिट, बट इंटर फॉर श्योर यू शुडंट। Like I said, how much time to devote to which topic, decide already 19 hours का breakup, and in what order। तो मैंने जो आपको प्लान देखा है उसमें you decide the order। तो ideally let's say if I'm a morning person, ये morning में morning of the day of holiday I will keep the most important topics, and morning of the exam I will keep the most important topics, so I don't miss out on these। Don't forget time for last minute revision, this is the most important। Now two more things that I wanted to share here is, लोग पूछते हैं कितने घंटे सोना चाहिए एग्जाम के बीच में एक्सेट्रा। My answer to this is, and something that one of my faculties had told me, मतलब पूरी क्लास को बताया था, and I totally agree to that answer। There are few people जो लोग सिर्फ 4 घंटे सोएंगे ना तो उनको चले। There are few people जिनको 7-8-9 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। 9 तो चलो ज्यादा हो गया, I think 7 hours of sleep is enough, but there are few people who cannot survive without 17 hours of sleep, and there are few people who can survive with 4 hours of sleep also। That faculty had said, if you are a person who cannot survive without 7 hours of sleep, make sure you end up sleeping 7 hours, even if that means a topic shooter। Having that mental concentration, mental focus during the exam hours is the most important। वो 3 घंटे के अंदर आपका mental focus नहीं होगा तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार। So having necessary sleep is important। But if you are a person जिसको 4 घंटे की नींद से चल जाता है, तो 4 घंटे से 1 मिनट ज्यादा सोने की भी जरूरत नहीं। Why do you want to sleep? मतलब might as well end up covering some time in revision if you are someone जिसको प्रॉब्लम नहीं है 4 घंटे की नींद से। Now you know what kind of a person यार, आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, that you know very well। So I will not advise you कि रात को जागरा करो versus not, you know it very well। But just one example, CA final audit के टाइम पे मेरा कोर्स खत्म नहीं हो रहा था, I ended up sleeping for just 2 hours। उस टाइम पे what I told myself is, and I had foreseen that coming actually। आपने प्लान भी देखा, प्लान में मैंने लिख रखा है कि 4 बजे उठूंगा टाइप्स, बिकॉज ऑडिट सो सी पैन थोड़ा सा बड़ा था। बट उस टाइम पे द वन थिंग दैट आई टोल्ड माय सेल्फ इज दैट दिस इज गोइंग टू बी मेरे लाइफ का लास्ट ऑडिट एग्जाम। लॉजिकली सो, बिकॉज सीए फाइनल वंस यू क्लियर तो ऑडिट का एग्जाम थोड़ी दोगे, यू डू ऑडिट डिफरेंट थिंग, यू विल नेवर गिव एन एग्जाम। सो लाइक दिस इज मेरी लाइफ का लास्ट ऑडिट एग्जाम, एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट दिस इज लाइफ का लास्ट ऑडिट एग्जाम, व्हिच मींस आई हैव टू मेक श्योर आई क्लियर। That was my motivation for staying awake। That was my motivation to end up completing the course। Other approach कुछ भी, I lose my motivation, that is other way। मोटिवेशन में अरे भाई अटेम्प्ट तो लग गई बात, अदर वे अराउंड। माइट एज विल टेक दैट मोटिवेशन, सोचो यार मेरे को अटेम्प्ट नहीं चाहिए, एक ही बार पढ़ना है भाई, नेक्स्ट टाइम पढ़ूं उससे तो बेटर हम पढ़ के खत्म। So these are like few things, just try to keep motivating yourself by saying things like these, and trust me on this, these are very helpful and empowering। तो जागना तो इधर वे ही था, बट नाउ अब जागा एंड अब एटलीस्ट दुख नहीं हुआ जागा। चलो नेक्स्ट। I hope everything is clear till here। Any question so far as the 1.5 days thing is concerned, either in terms of the schedule or in terms of the resources to use? Any questions before I move to the next part, which is the 3 hours of exam? Any questions guys? यार वीडियो तो चालू कर लो एटलीस्ट, आई नो आई एम स्टिल ऑनलाइन, वरना ये लग रहा है कि नेट बंद हो गया क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ना कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है। हेलो, क्या चल कुछ नहीं सर, आपने बोला इंटर वाले सिलेबस थोड़ा भी ना छोड़े, फाइनल वाले थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं। सर बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन के, उन्हें तो आपने काउंट भी नहीं किया। ओ अच्छा, फाउंडेशन के, वेरी गुड। फाउंडेशन वालों को जरा भी पूछो।
अगर इंटर वाले नहीं छोड़ रहे तो फाउंडेशन वालों को तो नहीं ही छोड़ना चाहिए. एंड बाय द वे व्हाट आई सेड इज इक्वली एप्लीकेबल टू फाउंडेशन स्टूडेंट्स आल्सो. ये पूरा जो भी मैंने चीजें बोली फाउंडेशन वालों को इक्वली अप्लाई करता है. मतलब मैं एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट के ले रहा हूं तो आपके लिए रिलेटेबल नहीं होगा, लेकिन फाउंडेशन वाले भी कैन टेक क्यूज फ्रॉम इट. अब ये 20 घंटे तो फाउंडेशन वालों के लिए भी अप्लाई करेंगे. एमटीपी, आरटीपी, ब्रेक्स, बफर सब कुछ फाउंडेशन वालों के लिए इक्वली अप्लाई करेंगे. लास्ट मिनट रिवीजन फाउंडेशन वालों को भी कर, एमसीक्यू नोट्स फाउंडेशन वालों को भी बना. ठीक है. और कोर्स इंटर वालों, guys please do ask questions. Audit notes, yeah, let me show you a glimpse of it. But they were like MCQ notes. Audit में मैंने concept notes नहीं बनाए थे. See, I did not end up making a lot of these notes because I also feel these are time taking. But I certainly made them where it was extremely important in terms of let's say PGP. जहाँ पे मेरे को पता है last day पे मेरा बहुत time save हो जाएगा. So these audit MCQ notes, let's say, for example, let's say, so QR based quality review board चलो ये तो relatable नहीं होगा. So let's say CA provided wrong information to assessing officer, then what is the penalty? Penalty is jail for 7 years plus fine. तो लिख दिया, ये MCQ में पूछा हुआ था, मैंने लिख दिया. Mistake in prospectus, अगर mistake है prospectus में, then auditor का fault was only technical. That is verification of assets. Then only penalty leviable. तो question was penalty leviable होगा या फिर उसको imprisonment होगा etc. तो उसका मैंने आंसर शॉर्ट में जस्ट एक दो बुलेट. अब लेट्स से यहाँ पे disclosures related to ICDS. ICDS is tax code disclosure standards. Mandatory in 3CD, which is tax audit. Fair prospective CA soon to join audit firm as partner cannot be internal auditors, internal expert. तो हो सकता है नहीं. तो probably the question would have been के who of the following is not eligible to be the auditor's internal expert, and then one of the answers would be prospective CAs to join. तो who can be, ये तो चलो नहीं है, तो who can be, then the partner of the auditor firm can be, the temporary or permanent staff of the audit firm can be, versus who cannot be the prospective. तो ये लिख दिया मैंने, मेरे को MCQ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इधर सिंपली लिख. If audit is considered by different engagement team than previous year, then the new engagement team shall consult the previous engagement team. तो अब उसमें लिखा होगा consult whom लिखा होगा या फिर something like that, right? So this you will come to. Seed risk above 50 crores, तो यहाँ पे अगर लिमिट पूछी होगी तो आप लिमिट हो. And one more hack by the way is, guys, here a few questions I guess. I'll answer these. So one more hack by the way is, I told you make a separate list for mnemonics. Now, especially for Inter, it is pertinent to make a separate list for all these limits. For example, company law में काफी सारे limits है, company audit में limit है in terms of, अच्छा, let's say cost audit कितने अमाउंट के ऊपर करवाना है आपको, वर्सेस इंटरनल ऑडिट कितने अमाउंट के टर्नओवर के ऊपर कराना है, CSR कितने अमाउंट के टर्नओवर पे. ये इतने सारे नंबर्स होते हैं ना ऑडिट में, इतने सारे लॉ में इतने सारे, यू टेंड टू फॉरगेट. अब मैं ये नहीं बोलता कि पेनल्टी याद रखो, पेनल्टीज चलेगा, लेकिन ये सारी लिमिट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आपको इंटरनल ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन पूछा तो आपको पता होना चाहिए. कॉस्ट ऑडिट में भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का अलग है, कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का अलग है, तो वो सारी ना आप भूल जाओ. तो माइट एज वेल राइट देम इन अ सेपरेट नोटबुक, एंड एग्जाम के एक डेढ़ घंटे के पहले आप रिवाइज करते. अब एग्जाम के एक डेढ़ घंटे पहले रिवाइज किया होगा तब तक याद रहेगा, मैं अज्यूम करता हूं. एंड आई यूज्ड टू डू दैट बाय द वे. मैंने सारी लिमिट्स एक जगह पे सेपरेटली लिखी, एग्जाम के एक डेढ़ घंटे पहले मैं रिवाइज कर लिया. समवन हु आस्क्ड ऑडिट लॉ का क्या है, क्या दिस इज वन ऑफ द हैक्स. तो जो भी चीजें ऐसी हैं आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है लेकिन याद नहीं रहेगा, एक जगह पे सेपरेटली लिख दो. इक्वली अप्लाइज टू फाउंडेशन स्टूडेंट्स एज well. Okay, so I have 3-4 questions in the chat box. How many months prior to exam have you started studying? यार ये ना आंसर दोनों के लिए डिफर करेगा. सी इंटर और फाइनल के लिए, फाउंडेशन के लिए तो अप्लाई नहीं करता है. सी इंटर के केस में माय सेल्फ स्टडी वाज 3 months बिफोर द एग्जाम, बट ये 3 months वर डिवाइडेड अक्रॉस 8 सब्जेक्ट्स. तो अब मतलब डिवाइड कर लो यार, 3 days into 3 90 days थे, उसमें डिवाइड बाय 8 कर लो, मतलब मोटा मोटी 10 days, and I had done like 2 readings. Inter में I had done 1 reading plus 1 revision, so 2 readings that way, which means I think first reading would have been 6-7 days and second reading would have been about 3 days. And by the way, for those of you who might have this question in terms of अच्छा अभी कितने दिन मेरे को लेने चाहिए to cover the course, my answer to this question is about 2.5-3 days is ideal. My approach used to be
For CA final, for example, first reading आप मोटा मोटी 14 days लो, 12 to 14. Second reading आप 6 to 7 days ले लो. Third reading should be divided by 2. Third reading would be the last reading for CA final. For inter it was just 2 readings. So inter में first reading would be 7 days. Second reading would be 6 days. And the last reading, which is the day before exam, will be 1.5 days. If you see this thing, आपका learning curve better है. Every time you study a subject, you reduce the time taken by half. तो पहली बार आपने 6 दिन लगाए, दूसरी बार 3 दिन लगाए, तीसरी बार 1.5 दिन लगाए. तो आप अगर 3 दिन में कर पा रहे हो तो आप 1.5 दिन में कर पाओगे फॉर श्योर. So this is my answer to how many months I had taken. In terms of CA final, I had like 5 months before CA finals, but 5 months again divided across 8 subjects you can calculate. But mota moti to answer your question, I think first reading was between 12 to 14 days. Second reading for audit was between 6 to 7 days. Audit mein I had taken one more reading because audit thoda aisa that is for important topics. So again, one more reading, 3.5 days, and obviously last day is 1.5 days. Audit, which book I preferred for CA finals? Yeah, so to be honest, now it was a mix of a lot of sources, and I struggled a lot so far as audit was concerned. But at least for these special audit wale chapters, I had preferred module only. मैंने ये कर रखा था कि मॉड्यूल में ही आई हैड मार्क्ड रिलेवेंट क्वेश्चंस कि हाँ दिस कुड बी आस्क्ड, दिस कुड बी आस्क्ड. तो मॉड्यूल को ही मैंने इस तरह से पढ़ा कि वो मेरी नोट्स बन गई. तो मैंने रिलेवेंट चीजें ही मार्क. एंड लाइक आई सेड इनिशियली, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कवर नहीं थे या जो मेरे को लगा क्वेश्चन बैंक से इजियर है, वो मैंने क्वेश्चन बैंक में अलग से कवर किए. Otherwise, I covered it from module. Study leave plan, how many revisions, how many paper solving? So, good question. And by the way, just coming back to this. See, ये जो मैंने 20-21 घंटे का प्लान बोला है ना, you might ask कि ये कब बनाना है? अभी बनाना है. When I say अभी मतलब not right now within the seminar, but when you do your last 3 days वाला reading for each subject, that is when you have to. So very logical. अगर आपको चैप्टर के लिए 4 घंटे लग रहा है तो लास्ट दिन पे आपको 2 घंटे लगेंगे. Which is basically dividing the time taken right now by. That's how. Okay, so study leave plan. So, okay, so are you November 23? Okay, so for CA final, study leave about 5 months is what I had taken. I feel mota moti about 90 days for first reading CA final. First reading in study leave is 90 days. Second reading about 40 days should be fine. And the last reading would be depending on kitna time bachta hai, but then that would be about between 20 to 24 days last reading. So 3 readings is what I would suggest for CA final. For CA inter 2 readings are fine. Time ho to 3 readings bhi kar lo. Paper solving, I'll come to that slightly later. Just remind me in case I forget. How did I manage articleship and CA final studies and lecture contents? Okay, I'll not spend too much time on this. I'll answer this brief because you've asked this question, but for the audience is not extremely relevant. So in terms of managing articleship and CA final studies, yeah, to be honest now, in the first 1.5 years, my focus was more towards learning in articleship rather than my self-study. Because articleship is very, very important, and even for CA inter foundation students who remember this. But in the later half of articleship, I shifted gears. So it's not like पहले 1.5 साल पढ़ना, पहले 1.5 साल lectures वगैरह देखे, but then I was slightly slow, and then last 1.5 साल में I just switched gears, and then most of the time I spent was to watch lectures. Now something particular to me is what I used to do is just watch lectures. I used to not do self-study. While that is not ideal, मेरे को चलता. So the way I used to do is, I used to keep these targets. Okay, I want to complete this subject course ke lectures in, let's say, 2 months. I will divide the number of hours accordingly. Let's say 140 hours ke lectures, I'll divide it by 60 days, which is whatever. I mean, 2 hours per day, right? So you have to then think of it weekly. Every week you are supposed to watch 2 hours into 7 days. So 14 hours आपका every week खत्म होने चाहिए अपने lectures. तो आप वीकडेज में नहीं करो, तो आप संडे को बैठ के 14 घंटे के लेक्चर देखो, विच इज नॉट प्रैक्टिकल. तो आप जग मार के वीकडेज पे करो. तो अगर इफ यू डिवाइड द लार्जर टॉपिक, एंड दिस इज इक्वली ट्रू फॉर द रिवीजन एज वेल, इफ यू डिवाइड द माउंटेन, लाइक इफ यू डिवाइड इतना जो क्वांटम है सबसे बड़ा, उसको आप यहाँ पे भी टेक दिस एग्जांपल, इफ यू डिवाइड, रिवीजन इज द डिवाइड एंड कॉन्कर इज एक्चुअली द स्ट्रेटजी फॉर ऑल सीए एग्जाम्स एज अ फाउंडेशन इंटर सीए. If you divide तो फिर इतना टफ नहीं लगेगा, versus quantum seems very tough, and if you just get right everywhere, then why not? Okay, industrial training, okay, I'll come to that, or maybe you can approach me separately. Let me not go on to industrial training right now because थोड़ा scope के बाहर है फिलहाल.
engagement scope के बाहर है. Audit is less of understanding and more of cramming. रट्टा, what do you suggest? यार पहले तो ना चाहे अंडरस्टैंडिंग है चाहे क्रैमिंग रखता है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपको ऑडिट पढ़ना है, उससे कोई छूट का है नहीं आपको. Over the last 2-3 years, and in fact more than that also, I've been speaking to so many people, including a lot of rankers, and unanimously everyone believes that audit is by far the toughest subject in CA Inter, in CA Final. Inter chalo thoda controversy hai given EIS is also there, but for sure CA Final by far the most tough subject is audit. But life is unfair, but what makes it fair is that it is unfair for everyone. That is the thing. Audit papers tough है तो सबके लिए ही tough है. So that is the reality. You accept it. अब आपको understanding से करना है, रट्टा करना है. See, obviously, I feel understanding is most important. But at the same time, if you understand things well, but you are not able to articulate in the exam, अगर आप लिख नहीं सकते हो अच्छे से जो आपकी understanding, if you don't get those keywords in exam, obviously the examiner, right? For the examiner, the only way he can know if you know the answer is basically him reading your answer. So ultimately, you have to write it in the paper. अब आप किस तरह से लिख रहे हो, that approach is honestly upon you. Obviously, understanding is extremely important, and understanding से आगे बढ़ना है. But understanding at times has to be coupled with few memory techniques, few mnemonics, etc. So I would much rather take a hybrid approach. Industrial training, I'll answer it later. Study leave plan, I think I told how many revisions. Inter total 2 readings, final total 3 readings in the 3 months period for inter and 5 months period for paper solving. I'll come to slightly later. It I think answered. Sure. Yeah. Now, one thing is in terms of paper solving, and that's by the way the next topic I was coming to. So first is, let us discuss mocks. How many mock papers should you give? And, what is the ideal time to give mocks? How should you approach this, etc. My approach for mocks is very unique, and with a pinch of salt, ध्यान से सुनना. मेरे हिसाब से ना, writing papers is a must, because अगर आप papers नहीं लिख रहे हो और आप सीधा एग्जाम में खुद को टेस्ट कर रहे हो ना, it's more like you are let's say you are going without practice. You are let's say going to play a cricket match, but आप practice नहीं कर रहे हो. Net practice करना जरूरी है. Now the thing is कितनी करनी है? That is the question. I feel, to be honest, beyond an extent, just writing exams like writing mock test does not make a lot of sense. My point is, अगर आपको एक पेपर लिखने से आइडिया आ गया कि मेरी स्पीड अच्छी है, I will be able to write in exams. आपको जो भी आपकी गलतियां हैं वो एक पेपर से पता चल गई. Why to write the second paper? मतलब मैं पेपर सॉल्विंग के अगेंस्ट नहीं हूँ. पेपर तो जितने हो सके सॉल्व करने चाहिए. सारे पास पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी, दैट इज वेरी आइडियल. And if not सारे, then at least last 3 से 4 attempt के MTP, RTP and past papers are very ideal. If for those guys who would have papers, MTP बार के लिए last attempt की छोड़ भी दोगे चलेगा. At least RTP and past papers last 3-4 attempt पे करने चाहिए, and MTP second की करनी. Now paper solving important है, but आप वो फॉर्मली एग्जाम फॉर्मेट में लिखने में वो टाइम जाएगा. फॉर्मेट बनाओगे, ये उससे अच्छा यार रफ में कर लो. इट विल सेव योर टाइम. 3 घंटे का पेपर आप 1.25 घंटे में सॉल्व कर लोगे. आप 3 घंटे में 2 पेपर सॉल्व कर लोगे. तो now that is the all that you will have to take in terms of आपको एक पेपर लिखना है या 3 पेपर लिखना है. What that will depend on is आपने जो एक पेपर per subject. By the way, one paper is per subject, like 8 papers minimum, whether inter or final or foundation for foundation. So irrespective of what like you are in, what level you are in, 8 paper per subject is a must. उस एक पेपर पे से you evaluate कि number 1 स्पीड आपकी आ रही है नहीं, बिकॉज पेपर्स छूटते हैं सीए एग्जाम्स में, स्पेशली सीए फाइनल में पेपर्स छूटते हैं. इंटर स्टिल कम छूटते हैं, बट फाइनल में, इंटर में भी यार अकाउंट्स में तो छूटते ही हैं, एंड फाइनल में तो फॉर श्योर छूटते हैं. सो यू हैव टू हैव दैट राइटिंग प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ स्पीड. अगर आपको लग रहा है चलो मेरी स्पीड बहुत अच्छी, अगर नहीं है अच्छी तो ऑब्वियसली स्पीड अच्छी करो, एक और पेपर लिखो. पर अगर अच्छी है तो फिर सेकंड स्टेप इज नाउ यू थिंक के इन टर्म्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब आपके चाहे फॉर्मेट ऑफ सम है, in terms of the way you solve it, या फिर आपका जो पॉइंट्स है that you write theory, या फिर anything, you basically see कितना वो how many marks you will award to yourself. And by the way, writing mocks and checking it yourself is the best solution.
Because when you check yourself, seeing the suggested answer साथ में तुमको पता चलेगा कि अच्छा इधर ये लिखा है, इधर ये लिखा है. इससे 2-3 benefits है. Something that I have written over here as the last point. Examiner step into the examiner's shoes and think, अगर मैं मेरा पेपर चेक कर रहा होता तो मेरे को क्या अच्छा लगता, क्या खराब. Be very objective when you do this. क्या अच्छा लगता. For example, bullets में लिखा है अच्छा लगता, point wise लिखा है, versus paras अच्छा नहीं लगता. Underline selective keywords कर रखा है अच्छा लगता, versus let's say बहुत बड़ा पेपर है अच्छा नहीं लगता, बहुत काटाकुटी की है let's say इतना अच्छा नहीं लगेगा. इसके सबके मार्क्स नहीं कटते मैटर. This is just more from an optical lens. What you can improve in terms of the pattern that you've written your answer, in terms of the sequence you've written your answer. So when you step into the examiner's shoes and check खुद का मौकना, आपको काफी गलतियां रियलाइज हो. गलतियां बोथ. वन गलती अकेडमिक जो अरे मैंने इस तरह से सम सॉल्व कर दिया जबकि ये सिली मिस्टेक पे, वैसी गलती. एंड सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ द वे ऑफ राइटिंग. तो दोनों टाइप की गलतियां आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड यू हैव टू ट्राई टू. अब ये गलतियां होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आई नीड टू राइट वन मोर पेपर, ऑडिट का पेपर मैंने लिखा पर यार अब लिख के तो मेरे को पता चला कि मेरे को क्वेश्चंस याद ही नहीं आ रहे, तो अब वापस जब रिवीजन करोगे अब आप उस तरह से पढ़ोगे कि अब आप एक्चुअली एग्जाम में लिख पाओ. बिकॉज ऑडिट लॉ में सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि लोग लिख नहीं पाते. पढ़ने के टाइम पे तो पढ़ लेते, लिख नहीं पाते. सो एक पेपर लिखना मस्ट है. एंड इफ यू फील उसके बाद यू नीड some more time to actually you want more practice, then write another paper. One is bare minimum, उसके beyond का आपके पास जितना टाइम हो जितनी लिख सको लिखो. But I think speed is one category and second is कितनी गलतियां कर रहे हो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो. Is it compulsory to read the whole module while we are referring other faculties to? Okay, so I'll give a short answer to this. I had also referred to a couple of faculties के books in CMI. मैंने क्या किया था, मेरी जब फर्स्ट रीडिंग थी ना उसके उस टाइम पे ही मैंने मॉड्यूल के साथ कंपेयर कर लिया, देख लिया क्या चीज मिसिंग है क्या नहीं. अगर कुछ मिसिंग था तो मैंने वो फैकल्टी की बुक में ही लिखी. तो मैंने ना मेक श्योर कर लिया कि मॉड्यूल का सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैकल्टीज की बुक्स में क्या होता है ना, वो लोग मोटा मोटी 80-90% सब कुछ कवर कर लेते हैं, बट कभी ना कभी 10-15% छूट जाता है बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, उनको कम इंपॉर्टेंट लग रहा है चाहे कुछ. तो अब ये 10-15% का रिस्क है. You can definitely go for faculty's books, no nothing wrong, काफी बुक्स अच्छी भी होती है, but वो 10-15% का आप implicit risk ले रहे हो unless you can compare word by word with the module कि क्या आ गया है. If you ask 1 month before exam, वो comparison करने का सेंस है not at all. At this point जो भी रिसोर्स में से पढ़ा है वही रिसोर्स ब्लाइंडली फॉलो करो, दूसरे बुक्स के पीछे मत भागो. ये टाइम नहीं है वो सब करने. But if you are someone जिसका number 23 attempt है, then I will tell you अच्छा maybe first reading में you might want to compare the faculty book with the module to just see कितना cover हो रहा है versus. Okay, so now writing exams, coming to this, those 3 hours of exams. Okay, what is, please tell your audit and jobs. Okay, cool. So I'll come to that later. So in terms of writing exam papers, now those 3 hours of exam into 8 subjects, which is 24 hours, and elective होगा तो एक और घंटा 25 घंटे फाउंडेशन के केस में टाइम होगा. So those 20, mind well, those 24 hours of exam are going to decide your your results, and they will decide the results of your hard work for the last 9-10 months in case of inter, 3-4 months in case of foundation, and 3 years in case of CA. तो याद रखना वो 24 घंटे में आप मेसअप नहीं कर सकते हो. तो पहला स्टेप है आपको 1.5 घंटे में डेढ़ दिन में मेसअप नहीं करना है. 1.5 दिन की हम बात हो गई 1.5 days before exam that we spoke about. Now what now is important is those 3 into 8 24 hours of exam, because no matter how well you've prepared, but if you're not able to write the papers well, then all of it goes waste. Versus even if आपका preparation 50-50 था पर वो 3 घंटे में आप extremely you were extremely vigilant with full presence of mind, आपने काफी अच्छा पेपर लिखा, you will end up getting good marks. Hence these 3 hours of papers, 3 hours of exam become extremely important. First is how to spend 15 minutes, first 15 minutes. So अब I don't know if the thing has changed, but at least हमारे टाइम पे जो था MCQ का क्वेश्चन पेपर we used to not get within those 15 minutes to get it at the time of the start of exam. मतलब 2 बजे का पेपर होगा, 2 बजे MCQ का पेपर मिलता था. Versus
MC versus the subjective paper you used to get at 145. In which case, those 15 minutes will end up obviously spending reading the entire paper. And ये 15 मिनट्स में आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ, आपको सिर्फ सीक्वेंस डिसाइड करनी है। आपको पहले तो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस करना है, 6 क्वेश्चन थे, 6 में से आपको 5 क्वेश्चन चूज करने हैं एंड आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सी सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेंड करूं। अब अगर ये हो जाए आपका लेट्स से 12 मिनट में, तो नेक्स्ट 3 मिनट्स यू कैन स्पेंड सॉल्विंग वन ऑफ दीस क्वेश्चंस जो आपको सबसे पहले अटेंड करना है। व्हेन आई से सॉल्व मतलब बेसिकली अगर लेट्स से थियरी पेपर है तो आप सॉल्व मतलब पेपर तो है नहीं, हाउ विल यू सॉल्व, तो बेसिकली मेंटली यू विल रिवाइज, अच्छा इसमें ये 3-4 पॉइंट्स है, so that आपका वो टाइम वहां पे बच जाए, यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग व्हेन यू गेट द पेपर। So this is how you have to spend the first 15 minutes. Now you might want to ask, अच्छा what should be the choice of questions? 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5। तो अब ये होता है कि देखो अगर आपको छोड़ के गए या आपको कुछ नहीं आता तो वो तो नेचुरल एलिमिनेशन प्रोसेस है, वो तो आपको ऐसे ही नहीं आ रहा, आप वही छोड़ ही दोगे तो फिर सिंपल है, फिर तो अच्छी बात है, आपको चॉइस करनी ही पड़ने नहीं पड़ रही है। अब मान लो हाइपोथेटिकली आपको सब आता, एंड दिस बाय द वे आल्सो पॉसिबल कि आपको सब, तो फिर क्या होगा यहाँ पे ना, फिर मैं टाइम सोचूंगा क्या कि व्हाट आर दोस क्वेश्चंस जो मैं 3 घंटे में अटेम्प्ट करके आई कैन गेट मोर मार्क्स वर्सेस व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन व्हिच विल एंड अप टेकिंग मी मोर टाइम। फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल एफआर फॉर सीए फाइन, होता क्या है ना कि 5 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन होता है, छठे क्वेश्चन में 5 मार्क के 4 क्वेश्चन। अब हमारा जो सीए फाइन जुलाई 21 का एफआर का पेपर, उसमें क्वेश्चन 6 में सेम 5 मार्क के 4 क्वेश्चन थे। अब 5 मार्क के 4 क्वेश्चन थे, लेकिन आई फेल्ट वो 5 मार्क के नहीं 8 मार्क के होने चाहिए थे। जब 8 मार्क के बड़े क्वेश्चन थे उन्होंने 5 मार्क के दूर किए, व्हिच मींस अगर मैं वो अटेम्प्ट करने जाऊंगा आई विल टेक एटलीस्ट 1.5 गुना टाइम ऑफ व्हाट इट वुड टेक मी टू अटेम्प्ट लेट्स से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2। तो अगर मेरे को सब कुछ भी आता है ना तो मैं वो लेंथी वाले क्वेश्चन छोड़, क्योंकि उसके चक्कर में मेरा पेपर छूट जाए जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। So much rather choose those questions which can actually end up attending. So first is आपको क्या आता है वो सब कुछ आता है, then on the basis of that choose those questions which you will be able to attempt in those. Now there is a possibility कि आपको 2 क्वेश्चन आधे आधे आते हैं, ठीक है, अब कैसे चूज करना उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक क्वेश्चन जो आधा आता है वो 20 मार्क का कि यू नो यार एक पॉइंट तक मुझे सॉल्व करना था, उसके लिए मेरे को नहीं आता था, जबकि दूसरा क्वेश्चन है उसमें 5 में 10-10 मार्क, तो 5 या 5 में से कोई एक आता है और दूसरा नहीं आता है, पूरा ही नहीं आता है, जबकि एक आता है वो 10 मार्क का पूरा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, जो 5 भी आपको 10 मार्क आता है वर्सेस 10 मार्क नहीं आता है, मच रादर गो फॉर दैट 10 तो शॉर्ट हो एंड बाकी 10 मार्क वाला जो क्वेश्चन है उसको लास्ट के लिए छोड़। सो मैं क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट ही लास्ट में करूंगा, उसमें लेट्स से मेरे को 5 ए आता है या चलो 5 बी आता है, 5 बी पे अटेम्प्ट करूंगा। 5 ए के लिए अगर टाइम ही नहीं बचा इसका, हो सकता है पेपर वैसे ही छूट रहा था, तो वैसे ही छूट रहा था और कुछ नहीं आता है तो फिर तो दुख भी नहीं होगा यार, पेपर छूट रहा था तो वैसे भी नहीं आता था मेरे को, तो अच्छी बात है। फिर तो ये होगा कि आपके पास 90 मार्क का पेपर लिखने के लिए 3 घंटे, व्हिच मींस यू विल हैव मोर टाइम, सो देन यू आर एट रेस्ट, फिर तो टेंशन ही, वो 90 मार्क अच्छे से लिख पाओ। अगर टाइम बच जाता है तो उसमें भी 10 मार्क्स का यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करना ही है। आई विल कम टू दैट आल्सो। वर्सेस क्या होगा अगर आप 20 मार्क का अटेम्प्ट करोगे, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इफ यू फील लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 20 मार्क में मेरा इतना है कि मैं फॉर श्योर 15 तो लेके आऊंगा, तो ऑब्वियसली फिर वो 15 इज प्रेफरेबल ओवर दैट 10। लेकिन वैसे भी यार पता नहीं 15 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, आधे में सम छोड़ दिया, हो सकता है 5 ही आ गए, बिकॉज अनलेस पूरा सम करो नहीं आएंगे 20 मार्क, यू डोंट नो, एंड देन अगेन पेपर छूटने का भी रिस्क है। सो माइट एज वेल इन दैट केस गो फॉर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 10 एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर लो, दूसरा छूट भी गया तो चलेगा, और अगर टाइम बच गया तो वो 10 से फिर ट्राई टू गेट एज मेनी as possible. Fight for every mark, attempt 100 marks का है। If you don't attempt 100 marks, or when I say 100 marks, at least you have to strive attempting 100 marks. यार 100 की जगह 95 होगा, 90 होगा चलेगा। I attempted 798 marks in my inter out of 800, and I attempted 792 marks out of 800 in CA Fine. सिर्फ 8 मार्क, एंड वो भी जो छूटा था वो नहीं आ रहा था इसलिए छूटा था, मतलब इसलिए छोड़ा था रादर। सो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज पॉसिबल। अब होता क्या है, स्पीड, बाय द वे, कमिंग टू स्पीड, एंड आई कम टू सीक्वेंस स्लाइटली लेटर, बट कमिंग टू स्पीड इज अ मस्ट। अब 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए 2 चीजें, एक तो आपको सब आता भी चाहिए, एंड सेकंड आपको स्पीड भी होनी चाहिए, एंड स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको सब आता भी होगा, एटलीस्ट 6 में से 5 क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन आपकी स्पीड नहीं, तो क्या
होता क्या है ना, a very good friend of mine, उसका FR का पेपर which is accounts in CA final, he was able to attempt only 18 marks of paper versus I attempted 100 marks of paper, ended up scoring 86. He's as smart as I am. उसको भी 86% मार्क्स है, बट उसको 86% मार्क्स, जो 20 मार्क्स उसने छोड़ा, वो छोड़ा नहीं, वो छूट गया, वो अगर अटेम्प्ट करता तो फॉर श्योर उसके उसमें भी आ जाते, मतलब 16-17 नंबर आ जाते, which means he could have also got 86 marks, but उसका पेपर छूट गया. And this is what happens. आप 80 का 80% लाओगे तो 54 होगा, वर्सेस आप 100 का 80% लाओगे 80 होगा, 16 मतलब कर. एंड आप 80% लगाना है, 60 लगाना है, 70 लगाना है, 50 लगाना है, जो लगा. अब 50% भी लगा तो 100 का 50% is 50, 80 का 50% is 40, फिर रिस्क जोन पे. व्हाट इफ 39 आ गया? So speed is extremely important to pass, to get a rank. Speed is the must. तो 100 मार्क्स का तो पेपर अटेम्प्ट करना है ना. कमिंग टू अब स्पीड के लिए आप क्या करोगे? तो एक तो मैंने जो बोला, पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करो. दूसरी चीज, आपको आना भी चाहिए जिस वजह से आपको स्पीड. वन मोर थिंग इज देयर इज नो रियल नीड फॉर फॉर्मेट. ये इंटर और फाउंडेशन वालों के लिए खास, फाइनल वालों को तो बाय दिस टाइम पता ही होता है. नहीं पता है तो यार जान लो कि व्हेन आई से फॉर्मेटिंग, व्हाट डू आई मीन? टेबल्स बनाना, अंडरलाइन करना, जर्नल एंट्री के नीचे लाइन बनाना, नरेशन लिखना, ये सब के मार्क्स नहीं होते. आंसर के मार्क्स होते हैं, लाइंस के मार्क्स नहीं होते. वो डब्बे बनाने में ना काफी टाइम चला जाएगा, 5-10 मिनट चले जाएंगे, जिसमें और एक आंसर आपका अटेम्प्ट होगा. पेपर सुंदर दिखेगा लेकिन मार्क्स एडिशनल नहीं मिलेंगे ना, तो फायदा नहीं. सो फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम. दिस समथिंग आई एम रियली हैप्पी. तो ये एक चीज याद रखना. मैं अपना एक पेपर दिखाता भी, बट बिफोर दैट नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीक्वेंस. सो 3 घंटे में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वन चॉइस ऑफ क्वेश्चंस. और ये जो मेरे फ्रेंड का पेपर छूटा पाया था, जिसका 80 मार्क का अटेम्प्ट हो पाया, वो इसलिए छूटा बिकॉज उसने वो क्वेश्चन 6 लिया था एफआर का, जो 5 मार्क के 4 क्वेश्चन, तो उसको 1.5 गुना वहां पे टाइम लग गया, उस वजह से उसका एक और क्वेश्चन छूट गया उस बार. इसलिए चॉइस ऑफ क्वेश्चंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट 15 मिनट्स को लेवरेज करके वो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से दो. नेक्स्ट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. वन इज एमसीक्यू की सीक्वेंस. अब लोग बोलते हैं कि मैं एमसीक्यूज पहले अटेम्प्ट करूं या लास्ट में अटेम्प्ट करूं या पेपर के बीच में अटेम्प्ट करूं. कुछ लोग बोलते हैं पेपर के बीच में भी अटेम्प्ट करना है. सबकी अपनी अपनी सोच है. सी व्हाट फिट्स यू बेस्ट. अकॉर्डिंग टू मी, आई फील एमसीक्यू सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए. आई टेल यू व्हाई. एमसीक्यूज ना, आप अगर सब कुछ सही करके आ रहे हो तो एग्जामिनर मार्क्स काट नहीं सकता. सब्जेक्टिव में तो कभी भी बोल ही जाता है कि यार आपने सब सही लिखा फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे. स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट एंड लॉ, उसमें आप 5 मार्क का क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको गारंटी नहीं 5 में से 5 मिलेगा, क्योंकि आप कितना ही रेप्लिकेट कर पाओगे. हो सकता है 2 मार्क्स मिले, 3 मार्क्स मिले, पर एमसीक्यू 5 सही किए तो 5 मार्क्स मिलेंगे. व्हिच मींस 30 एमसीक्यूज के केस में यू हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग मार्क्स. माइट एज वेल डू एमसीक्यूज विद अ काम माइंड, जो आपके पास स्टार्टिंग में. जो लोग ना लास्ट में एमसीक्यू करने का सोचते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि लास्ट में एमसीक्यू के लिए आपके पास काम माइंड नहीं होगा. पेपर छूट रहा होगा, पैनिक मोड में आ गए होंगे. दिस इज व्हाट वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिड, कि एमसीक्यूज लास्ट में अटेम्प्ट किए, आपके पास टाइम नहीं बचा तो उसने रैंडमली एबीसीडी करके पेपर दिया. दैट इज द वर्स्ट थिंग टू डू. ये कभी मत करो. इसीलिए सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना. कुछ लोग बोलते हैं 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो. प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको जो 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वो 2 क्वेश्चन में आपको 1.5 घंटा लग गया. ठीक है, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन में आपको 1.5 या चलो 1.25 घंटा लग गया आपको 2 क्वेश्चन में. एंड फिर आप बाद में एमसीक्यूज पे आ रहे हो, तब उस टाइम पे कितना स्ट्रेस प्रेशर में होगे, पैनिक सिचुएशन में होगे, आप एमसीक्यूज में ऐसे ही गलती करते हो, फालतू की गलती करते हो. तो दिस इज नॉट वेरी वेरी एडवाइजेबल. आई विल रियली सजेस्ट एमसीक्यूज सबसे पहले स्टार्ट करो. हाउ मच टाइम यू शुड टेक फॉर एमसीक्यूज, आई डोंट नो. हाउ मच टाइम यू शुड टेक फॉर एमसीक्यूज, आई विल से डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, but 35 minutes to 40 minutes is ideal. Try not to take more than 40 minutes. अगर आप 30 के अंदर खत्म कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, which you can still do for law or audit also, क्योंकि उसमें इतना सोचना है. डीटीआईडी में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, which is taxation में भी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है. लेकिन फॉर EIS और ऑडिट और let's say law, you wouldn't have to do all of that calculation, so you can actually finish it within half an hour. हाफ एयर में नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स. डोंट टेक मोर देन 40 मिनट फॉर एमसीक्यूज. 2 घंटा 20 मिनट तो मिनिमम आपको सब्जेक्टिव के लिए रखना है. In terms of, if you ask me, it is mandatory to put question number or section number or not, I will say not at all mandatory, not at all.
सीए इंटर के लिए तो जरा भी मैंडेटरी, फाइनल में भी मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर लिखोगे तो अच्छा है। हियर इज व्हाट आई फील, यार 5-10 इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो याद कर लो तो आपके लिए ही भले में है। मतलब यार इफ यू नो सेक्शन 141 इज अराउंड डिस्क्वालिफिकेशंस, तो याद कर लो ये क्या, ये मतलब इट इज नॉट दैट बिग अ डील। 5-7-10 सेक्शन याद रखना टू बी ऑनेस्ट इज नॉट दैट टफ। आई एम नॉट सेइंग सारे के सारे सेक्शन याद करो, but at least prospectus वाला section, because prospectus let's say is an important question in inter versus disqualification is an important question versus directors का section will be an important section in CA fine। तो कुछ कुछ sections 5-10-15 sections याद करना कुछ गलत नहीं है यार। GST में section 7 is supply, section 15 is value, section 12-13 time, please be 12-13 है, that is IGST। बट एनीवे, सो ये कुछ कुछ सेक्शंस मेरे को अब तक भी याद है, याद रहेंगे लाइफ टाइम, बिकॉज़ वो पढ़ते टाइम इस तरह से पढ़े थे कि याद तो 5-10 सेक्शन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा याद करना मत जाओ, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। Yes, exactly. You will tend to lose, and thanks for adding this. So, middle of the paper MCQ is not at all suggested because you will lose momentum. आप लिख रहे हो पेपर, पूरा हाथ बैठा हुआ है, अब आप बैठ के MCQs करोगे आधा घंटा, आपकी जो स्पीड थी ना वो स्पीड चली जाएगी, वो स्पीड लाने में आपको वापस टाइम डालना पड़ेगा। इसीलिए वो तो मैं कतई सजेस्ट नहीं करूंगा, और लास्ट में तो भूल ही जाओ, लास्ट में MCQs करना ही, इसीलिए स्टार्टिंग में ही MCQs करने। Now, in terms of sequence of attempting questions. Now, obviously, first question should be one जिसपे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सबसे आपका अच्छा जो क्वेश्चन है, जो आपको पता है कि इसमें मेरे को मोटा मोटी फुल मार्क्स मिलेंगे या मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिलेंगे, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, गेट दैट इंप्रेशन इन एग्जाम। एंड देन देयर इज वन अप्रोच वेयर आई फील कि जो थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, नॉट नेसेसरली थियरी बट थियरी ओरिएंटेड, मतलब जो थोड़े प्रोविजन वाले होते हैं, जैसे अकाउंट्स में एएस हो गया, या फिर लेट्स से सीए फाइल में वन ऑफ टाइप का क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल। तो वो वाले क्वेश्चंस थोड़ा एंड में करने में फायदा क्या, डीटी में भी थियरी क्वेश्चंस है। मैं डीटी आईडीटी के बीच में सीए इंटर में आई प्रेफर कि आईडीटी में बाद में अटेम्प्ट करूं, डीटी पहले अटेम्प्ट करूं। उसका मेरा रीजन है कि अगर मेरे पास टाइम कम भी होगा ना लास्ट, इवन इफ आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू अटेम्प्ट थियरी समथिंग, वो तो मेरे हाथ में ना, मेरे को 2 पेज लिखना, 1 पेज लिखना, 1.5 पेज लिखना, वो तो मेरे हाथ में, कितना लिखना कितना नहीं लिखना, प्रोविजंस कितना एक्सप्लेन करना नहीं करना, वो तो मेरे हाथ में। सम्स को छोटा नहीं कर सकते ना आप, थियरी को छोटा कर सकते हो। सम आपने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो आधे में मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन थियरी के केस में आपने आधा भी लिखा तो भी आपको कुछ मार्क्स तो पक्का मिल जाएंगे, हो सकता है 3/4 मार्क्स मिल जाए। सो थियरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस को आप लास्ट में लिखो, जब आपका लास्ट 10 मिनट्स में 10 मार्क का लिखना है तो वो थियरी क्वेश्चन होना चाहिए, इज व्हाट आई, तो उसमें आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं हो गया, लास्ट 10 मिनट में आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे आपकी वो मिस्टेक नहीं होगी, तो जबकि वो आपकी थियरी में नहीं हुई। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वन दैट यू बेस्ट नो। एंड जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, मोर लाइक लेट्स से अ सिंगल एंट्री वर्सेस अ कंसोलिडेशन, सी फाइल में कंसोलिडेशन हो गया, वो लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आई फील मोटा मोटी थर्ड और फोर्थ इन सीक्वेंस, प्रेफरेबली फोर्थ इन सीक्वेंस अटेम्प्ट करो, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि नंबर 1 गलतियां बहुत ना हो। अब लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो पक्का गलती हो, पहले अटेम्प्ट करोगे तो एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट करने में, बीच में अटेम्प्ट करने में ये है कि आपकी स्पीड भी तब तक आ चुकी होगी एंड आपकी गलतियां की गुंजाइश भी कम होगी, बिकॉज आपका लास्ट क्वेश्चन नहीं। एंड श्योर माय सीए फाइनल एफआर पेपर, and this will speak a lot about my strategy. So I attempted 1 2 3 4 5 like I told you. Question 6 जो था मैंने अटेम्प्ट नहीं किया because वो question 6 was 4 question of 5 marks each. So I started with a question that I was confident about. So if you see, यहाँ पे तो चलो पहले पेज पे मैंने लाइंस बना भी दी, पर आगे मैंने कहीं पे बनाई नहीं है उसकी, तो यहाँ पे मैंने कुछ कटाकुटी नहीं की। नॉट दैट करोगे तो प्रॉब्लम है, बट इट जस्ट शोज योर कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट आई वाज मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट। यहाँ पे देखो मैंने लाइंस नहीं बनाई, राइट? मैं बोल रहा था लाइंस के कुछ मार्क्स नहीं कटे, आई गॉट फुल मार्क्स ओवर हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हां, आई हैव गॉट 7.5 आउट ऑफ 8, अब आधा मार्क्स क्यों काटा मेरे को नहीं पता, बट एनीवेज ठीक है, हार्डली मैटर्स। फिर यहाँ पे अगेन कुछ काटाकुटी नहीं, फिर दिस इज द क्वेश्चन आई वाज मोस्ट कॉन्फिडेंट फॉर। So I've got 18.5 out of 20 marks in this. Now next question is, ये चलो थोड़ा theory, ना this is part C of the same question, इसको गिन के 18.5 होगा, right? इसमें फुल मार्क होंगे, ये तो चलो सेम क्वेश्चन का पार्ट। यहाँ पे भी देखो मैंने लाइंस नहीं बनाई, ठीक है? अब I will थोड़ा जंप
By the way, notes are extremely important. Notes are very important things. लेकिन नोट्स के मार्क्स अलग से नहीं होते. सो नोट्स को थोड़ा सा आप रफ या थोड़ा रनिंग हैंड राइटिंग वगैरह में होगा तो नोट्स चलेगा. नोट्स डज नॉट हैव टू बी वेरी डिसेंट. Yes. So this is what I was talking about. Question 1. Question 1 is हमारा consolidation. CA final. This is attempted 4th in sequence. I can show you all this. So question 5 was the first one that I attempted. Question 4 was the second one I attempted. Okay. Question 3 was the third one that I attempted. This was a quick question, फटाफट हो गया. The time taking नहीं था. This was the lengthiest question जिसको मैंने attempt किया 4th in sequence. अब यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट टाइम कि अच्छा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, टाइम वेस्ट मत करो. आप पहला क्वेश्चन अगर कंसोलिडेशन या सिंगल एंट्री अटेम्प्ट करोगे, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना, आप बहुत टाइम एंड अप स्पेंड करोगे उसके अंदर कि यार मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं. ये हो गया. फिर इसमें भी इफ यू सी आई गॉट 19.5 मार्क्स आउट ऑफ. तो ये नहीं कि मेरे को आता नहीं था, बट यही अगर मैं पहले ले लेता ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता. आई टुक इट इन द 4th in sequence. एंड दिस इज द वन दैट आई टुक लास्ट इन द सीक्वेंस. नाउ इफ यू सी दिस इज अ लॉट ऑफ थियरी. काफी सारा थियरी ओरिएंटेड है इसमें, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट वगैरह, प्री क्लासिफिकेशन, बैलेंस शीट. तो इसमें पूरा थियरी ओरिएंटेड है. इसमें कितना एक्सप्लेनेशन लिखना है वो तो यार मेरे हाथ में. तो अगर इसमें कुछ एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम भी लिख दूंगा, शॉर्ट में भी लिख दूंगा तो भी चलेगा. So if I'm not wrong, this is like 4.5 marks मेरे को मिले हैं. This would be I think out of what 8 marks I'm guessing. And ये भी पूरा theory oriented question है. Scenario 1, Scenario 2, Scenario 3 पूरा theory oriented question है. ये पूरा जो क्वेश्चन है मैंने 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में 20 मार्क्स अटेम्प्ट किया. Ideally if you see, if you divide 180 minutes that you have 3 घंटा into 60 minutes for basically 60 minutes per hour into 3 hours is 180 minutes. What if you have 100 minutes? So per mark आपके पास 1.8 minutes मिलता है, which means मेरे पास last question के लिए 20 marks into 18 minutes 36 minutes मिनट. अब 20 मिनट डिवाइड बाय अगर 1.8 करूं तो मैं सिर्फ 10-12 मार्क का अटेम्प्ट कर पाता. बट मैंने पूरा का पूरा 20 मार्क का अटेम्प्ट किया. एंड पूरे के पूरे 20 मार्क में से इस क्वेश्चन में आई एंडेड अप गेटिंग, इफ यू सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, नो सॉरी इट इज क्वेश्चन नंबर 2. yes I ended up getting 4.5 and 8.5 which is 13 marks. अब ये आप बोलोगे कि चलो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा कम लिखा इसलिए मेरे मार्क्स लूज हो गए. करेक्ट. सो आई गॉट ओनली 13 आउट ऑफ 20. बट अगर मैं पूरा 20 मार्क का छूट जाता जो मेरे फ्रेंड का छूटा तो मेरे को तो 0 आते ना. दैट इज 13 तो आ गए. सो दैट इज वन बेनिफिट राइटिंग अ थियरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड कि यार आप एटलीस्ट उस केस में आपको छोटा भी लिखोगे तो भी मार्क्स आपको फुल नहीं मिलेंगे, लेकिन मोटा मोटी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. So again, I'll repeat what all I discussed until here. First 15 minutes decide what should be the choice of question, what should be sequence of question. अगर time बचता है, then start solving one of these questions. मैंने the first question I regretted. How to make this choice of question? जो नहीं आता है उसको eliminate करो. अगर सब कुछ आता है, which is very good, then in that case go for those questions which will take less time. जो मेरा CA final FR का example था. अगर सब कुछ नहीं आता है, मतलब 2 क्वेश्चंस नहीं आते तो क्या करोगे? तो फिर मेरा वो 20 मार्क 10 मार्क वाला जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, देन गो फॉर लेट्स से 10 मार्क्स ताकि 10 मार्क का छूट भी गया तो वैसे ही टाइम कम. सीक्वेंस मैंने आपको बताई. एमसीक्यू सबसे पहले करो. डू द वन क्वेश्चन दैट इज यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट, यू नो, आंसर दैट क्वेश्चन सबसे पहले. एंड द थियरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस इवन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड टीटी में भी या आईडीटी में भी थियरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, उसको आप लास्ट की तरफ अटेम्प्ट करोगे तो चलेगा. स्पीड इज अ मस्ट. स्पीड नहीं होगी तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा. 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होगा तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे वो 40 हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे रैंक हो, कुछ भी हो. स्पीड इज अ मस्ट. लाइंस बनाने की इतनी कोई जरूरत है नहीं, तो डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. स्ट्राइव फॉर एवरी मार्क, सो ट्राई टू अटेम्प्ट. इवन इफ नहीं आता है ना यार, कुछ ट्राई कर लो, कुछ तो ट्राई कर लो. एंड दिस इज व्हाट आई हैड एक्चुअली डन बैक इन माय आई गिव एन एग्जांपल. मेरे बैक इन माय इंटर there's one question that they had asked was small company की definition. यार मैं नहीं पढ़ के गया, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया. वो थोड़ा सा स्मार्टली अटेम्प्ट किया कि वो क्वेश्चन पे से आंसर समझ आ जा रहा था. So question was more like अच्छा इसका turnover is let's say I don't know what the limits were but I think 50 crores आसपास कुछ तो लिमिट्स वगैरह था. तो what I did essentially was उसमें मेरे को आइडिया आ गया, अच्छा ये डेफिनेशन होगी ना, अटेम्प्ट एंड आई गॉट दोस मार्क्स. कभी कभी होता है कि यार नहीं भी आता है तो भी 4 मार्क के क्वेश्चन में से लिख दिया तो शायद आधा 1 मार्क मिल जाए, शायद भी आधा भी कुछ भी मिल गया यार. हो सकता है वो 59 को 60, 39 को 40 बना दे.
तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, जो हो सकता है आप अटेम्प्ट करो, राइट इन बुलेट, बिकॉज आप खुद भी अगर कोई पेपर चेक करोगे उसमें पैराग्राफ में लिखा होगा, आपको पढ़ना नहीं अच्छा लगेगा। बुलेट मेक्स इट मच इजियर फॉर यू टू रीड। एंड जो मैंने अपनी नोट्स मेरी बताई, तो उसमें अगर आपने देखा होगा मैंने बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, दैट मेक्स इट इजियर टू रीड इफ यू सी new version from and this is a very basic thing but still worth noting. So thoda this will make it easier for the examiner and thoda neat bhi lagega. Think of it from an examiner's shoes. अपना खुद का मॉक भी आप चेक करो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या चीज पढ़ने में एग्जामिनर को अच्छा लगेगा वर्सेस क्या चीज ऐसी है कि it will irritate the examiner. Now Lord it yeah, I come to it. There's one question I want to answer. Section number, I think I've already answered. Fair. Now, any question so far as writing exams are concerned? Anyone has any question here? No. I'll wait for 2 minutes and then we move on to the last bit of it, which is extremely important. I mean, you have a lot of time left. अब तक यार मैं जो बोल रहा हूँ समझ वैसे आ रहा है ना? At least say something so I know if you guys are here with me until here. Cool. A couple of more yeses would be helpful. But is all of this making sense? Is this helpful? I am assuming there are no questions. If there are any, please feel free to ask on this bit. And then I move to the last part of the webinar, which I feel is the most important of all. इसके लिए रखा था webinar है. Cool, I'll go on to it. So, CA exams very tough, no doubt to it, no matter what people say. But what I feel is, and after having appeared for all 3 levels of CA, so CA exams definitely are a test of knowledge and no doubt to that. More than the test of knowledge, they are a test of your temperament, a test of your mental strength, mental ability, your composure, your calmness, everything. Because I have actually seen that even the people who are extremely smart sometimes find it difficult to sail to CA exams because they probably end up, stressing a lot about things. होता क्या है ना, when I was in CPT, हमारे faculty ने बोला था कि there are 2 kinds of people who find it tough to clear and one set of people who find it very easy to clear. Yeah. क्योंकि जो लोग 10th 12th तक, those who are very brilliant, rankers, etc., find it very tough to clear CA. Like क्यों? And then he said कि ऐसे लोगों को ना कुछ भी गलत होता है ना, तो they cannot accept that easily. They are like, अरे 100 मार्क का पेपर मेरे को 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, तो ये नहीं सोचेंगे 95 का, ये सोचेंगे कि मेरे को 5 मार्क का नहीं। अब प्रॉब्लम ये आप 95 का आता है, 95 लिख के आओगे आपको 95 मार्क्स मिलेंगे, which is super इसलिए फाइनल आंसर, बट क्या ये प्रॉब्लम versus someone who let's say was not रैंकर until 10 12, या मतलब चलो रैंकर था नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बेसिकली जिसको पता ही है कि 10-20 मार्क को मेरे को वैसे भी नहीं आने वाला एग्जाम, उसको 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं भी आता ना, उससे मेरे को 80 मार्क्स आ रहा है, मैं 80 मार्क्स कर, those kind of people ending up stealing through easily. So that is what I took from him, and I really tried making sure I don't fall in that first category. So remember, the intention is not to score 100 marks. The intention ultimately, yes, is to clear. It could also be to get a rank. It could also be to get an All India rank. But my point is, even All India rank one, who is, let's say, Inter May 22 में Rajan, who is I think from Aurangabad, उसको भी 100% marks नहीं है. So 100 marks लाने से यार बंदी सब पेपर लिखने से यार वन आता है, यहाँ रैंक आता है, यहाँ पास होते हो, whatever. So you should not stress a lot about अगर कुछ नहीं आया एग्जाम में तो नहीं आता 10 मार्क का क्वेश्चन पॉसिबल है. Let us come to that. One is
This quote is my favorite. And the quote is, all the water in this world can't sink the ship until it gets inside. So what this quote essentially means is, unless and until you mentally give up, there's nothing that can pull you down. And I'll give you another example. काफी लोगों का क्या होता है, एग्जाम जाने से पहले ही हार मान लेते कि यार हमसे तो यार पहले ही हार मान चुके, आपने तो पेपर ही नहीं देखा है अभी तक. चलो किसी ने पेपर दे दिया है, पहले से ही हार मान लिया, अरे भाई रिजल्ट तो आने दो. काफी लोग तो प्रिपरेशन स्टेज पे बोल देते रहे मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा. So yaar, unless and until like you give up, if you let the water inside, if you give up, then obviously फिर तो यार कोई क्या ही करेगा. A lot of people, this is a big problem if you see it. A lot of people go by what others say कि यार यार वो बोल रहा है यार दोनों ग्रुप तेरे तो कैसे ही होंगे एक साथ, what the fuck. तो उसने बोल दिया तो क्या हो गया यार, हो सकता है. ये प्रॉब्लम मेरे को भी इंटर में आया था. People used to say it is very tough, very tough, very tough. और मैं तो 400 पीरियड लगाए रखा था. And then जब मेरा रिजल्ट आया, मेरा यार 6 आया, तब मेरे को पता चला कि अरे यार ये तो मतलब I deserved getting a rank, or I could have targeted a rank. Chalo, that's a whole different thing. I never targeted a rank. I never studied for a rank. I studied for the concepts, etc. Lekin the point here is, लोग जितना tough बोलते हैं उतना होता नहीं. It is tough, no doubt. But people make it tougher mentally. So you don't have to, mentally bother a lot about it. So just remember this one quote all throughout. You don't have to give up. Don't give up until the date of the 8th exam, which is either 17th or 18th as the case may be, or 16th to 17, 18 hoga. Don't give up until the last minute of your exam. Mahabharat. So I really draw this analogy often that the Mahabharat battle lasted for 18 days and CA exams are 16 days. So CA exams are nothing less than Mahabharat, because in your lives it holds the same importance that the Mahabharata battle held in the lives of Pandavas. So CA final exams are as important as Mahabharata. That's the level of importance. And again, it's similar to, let's say, climbing Mount Everest. But speaking of which, there's one thing that I want to. A lot of people, one of you asked about monks, one of you asked about revisions, etc. So I always give this Mount Everest analogy. काफी लोग ना ये लोग काफी फैकल्टीज ये चीज बोलते हैं कि आपकी एग्जाम के पहले आपको एक 16 दिन का एक रिवीजन पहले ही कर देना चाहिए, जिसमें आपको हर दूसरे दिन यू शुड राइट अ पेपर. आई एम अगेंस्ट दैट. आई फील लाइफ में माउंट एवरेस्ट दूसरी बार चढ़ा जा सकता है. आसानी नहीं चढ़ सकते हो, दूसरी बार चढ़ तो सकते ही हो, बट एक साथ 2 बार माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ेगा. माउंट एवरेस्ट से नीचे उतर के वापस माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाओगे. व्हिच मींस वो 16 दिन की मेहनत अलग ही है. इतना मतलब you need a lot of strength, both mental, lot of energy consumed during those 16 days. आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई मैं 10 से 26 अप्रैल तक मैं वो 16 दिन एक बार करूं एंड वापस 1 मई से 17 मई में वो 16 दिन करूं. नहीं हो पाएगा. आपकी पूरी एनर्जी चली जाएगी 10 से 26 अप्रैल में. आप उधर अंडर परफॉर्म करोगे इन योर. तो आप नेट प्रैक्टिस में यू कैन नॉट एंड अप कंज्यूमिंग योर एनर्जी. आप थक के फिर मैच खेलने जाओगे तो आप पहले आउट हो जाओगे. तो my personal take to this is का mock in terms of like following the same pattern is no. एक 3 days per subject in this reading and अगर आपके पास दिन कम है तो कम दिन लो and then topics भी थोड़े से कम कर दो. Revise the most important topics. But 16 दिन वाला रिवीजन मत करो. फालतू ड्रेन आउट हो जाओगे, बर्न आउट हो जाएगा. So that I feel should not be done. The way I used to keep myself motivated during CA final exams, one thing I told you ना, जैसे audit के पहले मैंने सोचा था कि this is life का last audit exam. And when you think about it ना, बहुत confident. Same चीज 10th में सोची ये life का मेरा last science exam है यार. खाली अब चल रहा है. I knew I was going to take commerce, life का obviously science for that. Same thing I thought about CA final audit, life का last audit exam. EIS के लिए सोच रहे यार CA inter में life का last EIS exam, and I have to make sure it is last का last. Another thing what I used to do is after every paper, I used to think, see there are 16 days and 8 exams, right? So अगर आपका एक पेपर हुआ तो आपने 12% जर्नी खत्म कर. 2 पेपर हुआ तो 25% जर्नी खत्म. 4 पेपर हुआ तो 50% जर्नी खत्म. After every exam, I used to think mentally, अरे 12.5% जर्नी खत्म, 25% जर्नी खत्म, 37.5% जर्नी खत्म, 50% जर्नी खत्म. When you think it this way, ना, तो you feel a sense of happiness rather than that pressure कि अरे इतने दिन बाकी exams बाकी है. आपको कहीं ना कुछ क्यों यार, बस 5 दिन, बस 8 दिन और बस 10 दिन और हो जाए. So this is one approach that I used to use and trust me on this really helped out.
So that is one thing. And what happens is a lot of times, see, देखो सी एग्जाम्स है ना, पेपर्स तो टफ आने ही है. हमारा ऑडिट पेपर they said was the toughest in all time, or at least the toughest in last 7-8 years. पूछना किसी को जुलाई 21 सीए फाइनल ऑडिट पेपर. अब मैं जब पेपर देखा, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आता है ना ये क्वेश्चन आता है. मैंने पहला पेपर आई यूज्ड टू हैव अ हैबिट कि पीछे से रीड करना चालू करता था. लास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं बोला आगे से चालू करते, फर्स्ट क्वेश्चन से रीड करना चालू किया, ये भी नहीं आता है. अब बीच में से चालू करते, वो भी नहीं आ रहा. मैंने बोला अरे आता क्या है, कुछ ही नहीं आता. मैंने बोला गलत कोर्स पढ़ के तो नहीं आ गया मैं. आई मीन ऑब्वियसली ऑन लाइटर नोट. And then I had out different. I was like, ठीक है, चलो जो आता है उसको टिक करता हूँ. कुछ तो आता है, obviously कुछ तो आता ही है obviously. And then that is why I started smiling and laughing. पेपर टफ है और मैं स्माइल कर रहा हूँ. And the reason I started smiling, I was like, सब लोग पढ़ के तो सेम बुक में से आए, मेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं आता. इंस्टीट्यूट हर किसी को तो कोई करेगा, वेरी लॉजिकली कुछ तो करेगा इंस्टीट्यूट, कुछ तो बेनिफिट देगा, बोनस देगा, ये वो जो भी, आई डोंट नो. Like अब तो वैसे ही सबके लिए टफ है. Again, life is unfair, but what makes it fair is that it is unfair for everyone. पेपर टफ है तो सबके लिए टफ, बट सबके होंगे नहीं. अगर वो 10 लोग पास हो रहे हैं, you have to make sure you are in those 10% people. तो उस टाइम पे आप अगर स्ट्रेस ले लोगे, अरे यार अब तो अटेम्प्ट लग गया, इतना टफ पेपर है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ऐसा नहीं भाई. उस टाइम पे ट्राई करो, एटलीस्ट एफर्ट तो मारो. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. ऑडिट में मेड दैट एफर्ट, आई गॉट 59 मार्क्स. Missed 1 mark to exemption. One of the exemption आ जाता है. Getting an exemption in a tough paper is extremely good. तब तो 40 लाने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, आगे 59. So this is one thing that इस टाइम पे कितना भी टफ लगे, just 3 घंटे सेल थ्रू करो. उस टाइम पे रिजल्ट की मत सोचो. Just think of trying for every 1 mark, half mark getting that. Again, one example from my 12th standard. And by the way, C exams है तो do expect tough papers. टफ पेपर्स के बाद अपने को स्टम्प होल्ड नहीं हो जाने का. अगर यॉर्कर आ रहा है तो अपने को टक करना है. सो व्हाट हैपेंड इज, इन माय 12th स्टैंडर्ड मेरा अकाउंट्स का पेपर ना थोड़ा छूट गया था. 2 मार्क का पेपर छूट गया. आई फेल्ट, यार पेपर छूटा है तो अच्छा नहीं लगता. 2 मार्क का पेपर छूट गया था और मेरे को एंड फालतू का स्ट्रेस रहा नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्स तक. एंड देन ऑब्वियसली वो स्ट्रेस चले गया. तो हुआ ये रिजल्ट के दिन में मेरे को पता चला कि अकाउंट्स पे आई गॉट 98 आउट ऑफ 100. वो 2 मार्क का पेपर छूटा था, आई गॉट 98. बट वो अकाउंट्स के चक्कर में सेकंड पेपर पे इफेक्ट पढ़ सकता था, वो पढ़ा नहीं. मला आई डिड नॉट लेट इट अफेक्ट. बट व्हाट इफ वो अकाउंट्स के चक्कर में मेरा सेकंड पेपर में खराब कर दिया. दैट इज वन थिंग दैट यू रियली नीड टू कीप इन हेड. यार अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर है, जिस भी नंबर का पेपर खराब जा रहा है, आप भूल जाओ, आगे बढ़ो. क्योंकि उसमें तो शायद पास हो जाओगे, उसका नेक्स्ट पेपर रह जाएगा. ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है. लगता है कि यार मेरा तो ऐसे अटेम्प्ट लग गया, अब क्या करूं मैं पढ़ के. भाई ऐसा नहीं है, तुम हो सकता है पास हो जाओगे. एंड दिस हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल. सो वन एट बैड एग्जाम, डोंट वरी. लाइक आई टोल्ड यू, इंटेंशन इज नॉट टू स्कोर 100. यार 80, तुम सोचो, लाइक इवन इफ यू अटेम्प्ट 90 मार्क्स का पेपर, इवन इफ यू अटेम्प्ट 80 मार्क्स का पेपर एंड तुम डिसेंट भी लिख के आ रहे हो, इवन इफ यू गेट लाइक 70% ऑफ दोस 80 मार्क्स, इट इज स्टिल 56 मार्क्स. 6 मार्क्स मोर देन व्हाट इज एवरेज रिक्वायर्ड टू पास. लाइक 50% एवरेज चाहिए तुमको. That is the worst case. Yeah, देखो burnouts होते हैं. And one of the questions in the chat box is around staying motivation, daily basis, being time, etc. Burnouts are very natural. Burnouts also possible during your studies. So what is important is to take necessary breaks, to stay in touch with at least 1 or 2 very close friends, ताकि यार तुमको पता चले all of you are sailing in the same boat. तुम टायर्ड हो, सब टायर्ड है, तुमको एक्चुअली लगेगा. वरना फिर तुमको लगेगा यार मैं ही दुनिया छोड़ छाड़ के बैठा हूँ. 1-2 स्टूडेंट्स के टच में रहा, मतलब 1-2 फ्रेंड्स के टच में रहा करो, तो यू विल फील कि ओके इट इज द सेम थिंग विद हैपन, व्हिच इज हैपनिंग विद एवरीवन. कभी कभार यार मतलब नीचे जाके आइसक्रीम खा के आओ, कुछ नहीं तो 1 घंटा भी बाहर निकले अगर घर से, नॉट थिंग एग्जाम डेज, अभी द नेक्स्ट 1 मंथ, यार कभी कभार वीकेंड्स पे 1-2 घंटे जाके जस्ट थोड़ा बहुत घूम के आ जाओ, थोड़ा आइसक्रीम खा के आओ. ओके लाइक 30 डेज में से एक दिन जाके मूवी भी देख के आ जाओ, कोई गलत नहीं है. If that helps you get fresh, then why not? Burnouts are very natural and होना ही है. लास्ट 30 डेज में तो बहुत चांसेस है. मेरे साथ इंटर के एग्जाम के 4 दिन पहले मैंने आधे दिन पढ़ाई करना छोड़ दिया. मैंने पढ़ाई नहीं आधी. मेरे साथ सीए फाइनल में हुआ था अराउंड 15-20 अप्रैल. लकीली हमारा फाइनल पोस्टपोन हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग.
मैंने एक पूरा दिन पढ़ाई नहीं की थी, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखी. आई एम नॉट किडिंग. But I feel that is not waste of time. That is good use of time because that will ultimately help you prepare better, efficiency बढ़ा दे. Exceptional circumstances या prepare yourself for exceptional circumstances would be let's say बीमारी हो गई, मतलब वायरल वगैरह हो गया, ठीक है. या फिर let's say एक exceptional circumstance जो मेरे साथ हुआ था was from where I stay सामने एक बाबू जो is getting renovated. उस टाइम पे तोड़ फोड़ का काम चल रहा था, एक मुझे वीडियो बहुत ज्यादा स्टडी. एक दिन मेरी नेक्स्ट डे कॉस्टिंग की एग्जाम थी, आधे दिन पावर कट हो गया. व्हाट डू यू डू? यू कैन नॉट डू एनीथिंग, एक्सपेक्ट दीस सर्कमस्टेंसेस एंड खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो कि ऐसा कुछ भी होगा तो क्या है, कीप स्टडीइंग बिकॉज़ आई एम फाइटिंग अ बैटल ऑफ पावर. दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर. एंड कमिंग बैक टू द 16 डेज वाला थिंग, यार ये 16 दिन ना लाइफ में वापस नहीं आएंगे एंड मेक श्योर वापस ना आए. बाय द वे अटेम्प्ट नहीं किया तो कितने भी स्ट्रेसफुल टायरिंग ये 16 दिन है, ट्राई टू ऑनेस्टली एंजॉय द जर्नी बिकॉज एटलीस्ट सीए फाइनल के कंडीशन एंड ऑनेस्टली व्हेन आई से दिस ना, मेरे को भी गूज़बम्स आ रहे हैं. ये 16 दिन ना लाइफ में इतना सिखा देंगे ना, यू विल नॉट इवन रियलाइज. मतलब यू विल रियलाइज आफ्टर दिस एग्जाम्स गेट टू. लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल. वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइफ में कभी सुबह 4 बजे नहीं उठा. ऑडिट के एग्जाम के दिन सुबह 4 बजे, उसको तो पता भी नहीं था मैं 4 बजे उठ सकता हूँ. मेरे केस में I never knew I could survive on 2 hours of sleep. That happened. There's so many things you wouldn't even know that there's this potential in you. वो potential सिर्फ extremely stressful situations में ही unearth होता है. And these extremely stressful situations are the 16 days. So while these are extremely stressful, but enjoy the process. I know enjoy is a very threatful word to use because how do you enjoy when there's much stress around? But यार ये सोचो यार 12:30 है. It's more like, and I also compare CA and I broadly compare CA with a roller coaster. But ये 16 दिन भी roller coaster है यार. There are a lot of ups and downs. But make sure when the roller coaster ride ends, there is a smile on your face. वो रोलर कोस्टर राइड के टाइम पे तुम्हारी फटीग होगी, मतलब वो उल्टा हो रहे हो, तुमको डर लगेगा कि तुम गिर जाओगे तो क्या. लेकिन जब राइड खत्म हुई तब तुमको लगेगा अरे भाई मजा आ गया. तब सोचोगे यार मेरे को तो डर लग रहा था, तब तो खुश हो गए ना तुम. सिमिलरली यहाँ पे जब 16 दिन एग्जाम के खत्म हो गए, आफ्टर योर एग्जाम गेट ओवर, आफ्टर यू सी द रिजल्ट, जस्ट उस टाइम पे दो 16 डेज जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ seeing the laptop, seeing the mark sheet on your screen, and the happiness that will be there on your face at that point when you see those mark sheet, or on your face, or obviously on your mom and dad's face, or your close relatives' face. तो वो 16 डेज का मोटिवेशन यही है कि तुम यही सोचो कि भाई पहले तो खत्म हुए 16 दिन कभी, तो 12.5% वाला लॉस. एंड सेकंड इज जब खत्म हो गया, यू थिंक रिजल्ट रिजल्ट इज व्हाट विल बी द हैप्पीनेस ऑन यू. एंड ये 16 दिन में ना काफी बार ये होगा यार एग्जाम खत्म होना मैं गोवा जाता, एग्जाम खत्म होना मैं ये करूँ, एक लिस्ट बना दो ये सब की, वरना एग्जाम के बाद भूल दो. वो लिस्ट तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए कि एग्जाम के बाद में बैठ के ये सब करूँ. ये मोटिवेशन हुआ ना तो obviously, and roller coaster is honestly the best example. Last but not the least, think of it as just another exam. यार देखो, I know CA exams are different from any other exam you would have given so far. But यार ultimately तो है तो 3 घंटे का ही पेपर ना, जाके पेपर लिखना ही है ना. रॉकेट साइंस तो है नहीं, बुक में जो पढ़ा है वही पूछ रहे थे लोग. तो ये 10% लोग भी क्लियर तो होते हैं ना, ये तो नहीं कि कोई नहीं होता है क्लियर. यूपीएससी में पास रेशियो इज सो लो, यहाँ पे तो फिर भी 10%. So my point is, you have to just make sure you be in that 10%. And ultimately, my point is, see, while C exams are extremely important from a career viewpoint, and इसलिए I consider it similar to Mahabharata or Mount Everest or whatever the analogies that I've. But my point is, ultimately, तो 3 घंटे का exam है तो take it as this. Why do you want to ultimately stress a lot? The moment you start thinking it as अच्छा एक exam ही तो है, that is when you will start reducing your stress. कि पढ़ना तो ऐसे भी है वैसे भी है, स्ट्रेस लोगे एफिशिएंसी में आएगी, पढ़ नहीं पाओगे, याद नहीं आएगा, कम स्ट्रेस लो. आई एम नॉट इवन किडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. to be very honest, इंटर के टाइम पे आई वाज स्टिल स्ट्रेस्ड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल सेड यार टफ है टफ है टफ है. बट फाइनल के टाइम तक ना मैं रियलाइज कर चुका था यार टफ है, लेकिन पता है टफ है यार, दैट इज व्हाट सी इज. तो फाइनल के एग्जाम के टाइम पे ना मैंने स्ट्रेस करना बंद कर दिया. एग्जाम देने जा रहा हूं, हां भाई अच्छा खत्म हो रहा है, मैं फ्री हो जाऊंगा. The moment you start changing your mindset, and this is the difference. A lot of friends whom I know, एग्जाम में यार रोते रोते गए. काफी लोगों ने एग्जाम नहीं दी डर के चक्कर में, तो पास किए obviously.
एंड काफी ऐसे भी लोग हैं, मेरे को नवाई होती है यार ये लोग क्लियर हुए कैसे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू क्लियर, बट देयर enthusiasm level, their energy level, their positivity is so high that वो क्लियर हो गए. So what makes the difference is during those 16 days, obviously how you are able to cover the course is very important, but इसके सिवाय positivity, self-belief is the most important. And only when you are positive and you believe in yourself, वो आप 1.5 दिन में कोर्स खत्म कर लोगे, आप 3 घंटे का पेपर भी खत्म कर लोगे और अच्छे से लिख पाओगे. Positivity will feed into the force behind you being able to complete your course in 1.5 days or in the last 2 years. यार to answer your question regarding whether passing CA exams are luck based or not, यार देखो एक चीज है, to answer your question, are they luck based? Short answer is no. But if you want me to elaborate a little, I will say, see, everything in this world is luck based. यार आपका पैसा होना लक है, आज सनराइज हुआ है नहीं वो भी लक है यार, who knows, I mean, right? I mean, let's say you wanted to attend this webinar and you're able to attend that, is luck. Power cut हो जाता, नेट नहीं होता तो क्या होगा, आप you would call it luck. That is the point I'm trying to take. But luck is, you can consider it 50-50, you can consider it 99-1. I will say 99-1 है, लेकिन कभी कभी वो 1 वाला परसेंट तुम्हारे साथ अगर हो गया तो तुमको लगेगा 50% लग. So it is more of an occasional thing. There's actually this book called Psychology of Money. It's more like whatever happens with people now is 0.00001% of how the world works, but 80% of how they think the world works. आज अगर let's say मेरे किसी पेपर में कम मार्क्स आए because इंस्टीट्यूट की चेकिंग अच्छी नहीं थी, and by the way that has happened not just with me, but with a lot of people. That does not mean कि सबके साथ ही ये होता है, तुम्हारे साथ होगा ही. There is always that possibility, but तुमको वो पॉसिबिलिटी के पहले आई नहीं कि क्या चलो लक है या नहीं है, चलो लक बेस्ड है तो तुम क्या करोगे, भगवान की पूजा करना चालू कर दोगे, तुम पढ़ना छोड़ दोगे, वो तो है नहीं, तो छोड़ो ना, लक है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है. बट इन एनी केस माय शॉर्ट आंसर इज नो. लक लक पे इतना फोकस मत करो, यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज, योर एफर्ट्स. बाकी दैट देखो अल्टीमेटली पे तुम्हारा पेपर चेकिंग ऑन सैम्पलिंग बेसिस नॉट एट ऑल यार, पेपर चेकिंग तो 100% होता है. सैम्पलिंग बेसिस पे रीचेक होते हैं पेपर्स, मतलब कभी कभी लाइक कोई एग्जामिनर ने पेपर चेक किया, उसको एग्जामिनर को टेस्ट करने के लिए सेम पेपर वापस चेक होता है टू सी इफ दैट एग्जामिनर इज एफिशिएंट इनफ और नॉट. तो वो तो तुम्हारे फेवर में अच्छी बात है, वो एग्जामिनर की भी टेस्ट हो रही है. So don't really worry on that. So that is one thing, and WICASA will announce RRC soon, which will be right after exam. So leave planning on assignment focused. Yeah, so I'm sure WICASA is planning a lot of things. And by the way, on a side note, I know there's like just 3 minutes to go. So WICASA के events में participate is a must now after your exam, whether foundation or inter or final. तभी टाइम रिजल्ट्स तक है. एंड इवन बियॉन्ड रिजल्ट्स इन केस ऑफ फाउंडेशन एंड इंटर स्टूडेंट्स, फाइन वालों को बियॉन्ड रिजल्ट्स जरूरत ना पड़े इज व्हाट आई होप. But keep participating in all of these WICASA events, and what Aishwarya said is actually to participate in all of these inauguration competitions, student conferences. In fact, I was telling Govind I would have in fact wanted to come down to Aurangabad physically and meet you all, but ठीक है चलो वो नहीं हो पाया, we'll keep it for some other day. But these WICASA events help you a lot. So having said that, I'll just repeat what I just said. Don't give up. All the world is and think best is until it gets inside. So keep that mental resolve on. The CA exams have the importance of Mahabharata in your life, so take it as such. But again, at the same time, on the other hand, ultimately it's just another exam. So उतना भी stress मत करो. Take it थोड़ा lighter. माउंट एवरेस्ट एक ही बार चढ़ पाओगे तो दूसरी बार चढ़ने की कोशिश फिलहाल मत करना. 16 डेज का एक्सपेरिमेंट मत करो. डोंट बर्न आउट अभी से, एग्जाम में बर्न आउट कैसे. ये सोचते जाओ हर एग्जाम के बाद 12.5% जर्नी खत्म. एक भी एग्जाम खराब गया यार ठीक है, आगे पढ़ो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट. एंड बाय द वे वन थिंग, आफ्टर एवरी एग्जाम ना बुक्स अपने पेरेंट्स को बोले यार मेरी आंखों से लेके जाओ, इधर भी रखनी है, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. आपके सामने बुक्स होगी ना तो आपको देखने का मन होगा, अरे यार ये सही क्या, मैंने गलत किया, सही क्या, ये गलत, और फिर गलत होगा तो आपको दुख होगा. चलो सही होगा तो खुशी भी होगी, बट उसकी चांसेस क्या है, तो वो एग्जाम के बाद करो ना, मेडिटेशन तो बुक साइड में रख. 100 मार्क का टारगेट, सी टारगेट रखना कुछ गलत नहीं है, बट 100 मार्क के पीछे दौड़ना और एक भी मार्क आपको नहीं आ रहा है और ये सोचना कि यार मेरे को नहीं आता है, उससे तो मैं 99 का पेपर बिगाड़ना, ये मत करना. Burnouts are very normal. Everyone is sailing in the same boat.
Please take necessary breaks if required. Don't lose. Don't lose track. Don't really end up getting burnt out because stay on solar is fun. Be prepared for exceptional circumstances. चाहे बीमारी हो गई, चाहे आवाज आ रहा है, चाहे रेन बहुत होता है. एटलीस्ट नवंबर एग्जाम वालों को तो बहुत ज्यादा दिवाली है, फटाके फूट रहे, आप पढ़ोगे कैसे? आपके बगल में शादी है, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स होती है. तो थोड़ा भी मेंटली प्रिपेयर फॉर सच सर्कमस्टेंसेस एंड प्रोफेशनल थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली उसको डील करो, थोड़ा मैच्योरली डील करो. यार फ्रेंड के घर जाके पढ़ लो, किसी रिलेटिव के घर जाके पढ़ लो. जस्ट थिंक अबाउट इट व्हाट. बट उस टाइम पे डोंट लूज योर ट्रैक. That's it. I think that's broadly what I wanted to say. I leave you with these words. It's a test of temperament. Don't lose your self-belief. Your self-belief is everything. If you keep enough positivity in life, you will 110% end up hearing. That being said, yeah, just one thing is, I think Sharvari has asked this question: how to stay motivated on a daily basis and watch lectures despite being tired. Yeah, this is a very big challenge. It is a challenge with everyone. So, yeah, one thing is now that has really helped is staying in touch with them. Knowing that everyone is sailing in the same boat and knowing that सभी को ये issue है, it's वो आपका issue कम नहीं करेगा, पर आपको ये लगेगा अच्छा चलो मैं अकेला नहीं. जब आपको लगता है ना सिर्फ मैं ही ये कर रहा हूँ, तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम. कोई और फ्रेंड बोलेगा अरे मैं तो 8 से 10 रात को लेक्चर देख रहा हूँ, तो आपको होगा यार वो तो देख रहा है, मैं नहीं देखूंगा तो मैं पीछे रह जाऊँ. एंड कभी कभी ना थोड़ा लॉजिकली भी डील करो. इफ यू आर टायर्ड आफ्टर आर्टिकलशिप आवर्स ना, तो फिर ऐसे कुछ चैप्टर के या ऐसे सब्जेक्ट के लेक्चर देखो जिसमें इतना लोड नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है. या फिर जल्दी सो के यार सुबह जल्दी उठो लेके तक विद अ फ्रेश माइंड. सो दैट इज व्हाट आई वुड से. मोटिवेशन इज लाइक अ गैस, टू बी ऑनेस्ट. मैं आपको सोडा दूंगा, वो गैस उड़ जाएगा, राइट? सो मोटिवेशन शुड बी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक नहीं. मैं आपको खाली बता सकता हूँ कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू फॉलो. मोटिवेशन तो इज सेल्फ ड्रिवन. हाउ मोटिवेटेड आर यू टू क्लियर सीए इज व्हाट you should think of it yourself only. Acha, am I ready to have an attempt in CA Fine? Obviously, the answer is CA Fine or Inter or whatever the case is. Obviously, agriculture case. The answer is no. You wouldn't want to have an attempt. So, बैठ के देखो यार lecture. Simple. That's it. Over to Govind and Aishwarya. Thank you. Any questions? Please feel free to ask. Thank you so much, sir, for giving a priceless time for us from your schedule. I came to know today that your flight was today from Delhi to Ahmedabad. No, I was going to fly. I did not end up flying, but it would have been the case. You gave your time for us from your schedule. I thought you told that your flight was there. And it was really an enriching and productive session for all of us. Even my session, my attempt is in next November, but it was useful for me. How to manage articleship and this WICASA things and plus lectures. So how did you do that? I wanted to ask. Yeah, वो थोड़ा ना tough है, but what I did is basically, like I said, in the first one and a half years, my focus was more so towards one articleship where काम सीखना वगैरह. And I used to participate in these WICASA events over the weekend. So कोई भी conference होती है, usually Saturday Sunday कोई होती है, mostly सारे ये WICASA events जैसे आज भी Saturday, तो वैसे भी Saturday Sunday mostly तो off ही रहता है, like off season के time पे. एंड वंस लाइक 1.5 साल हो गया, उसके बाद ना मैंने थोड़ा फिर कॉम्पिटिशंस वगैरह कंपैरेटिवली कम कर दिया, थोड़ा फिर फोकस तब लेक्चर्स की तरफ ज्यादा बढ़ा दिया. तो जो टाइम अर्लियर आई यूज्ड टू स्पेंड इन माय कॉलेज और टू स्पेंड टाइम दैट आई यूज्ड टू स्पेंड ऑन लेट्स से दीस कॉम्पिटिशंस या फिर एंडिंग अप स्पेंड वर्किंग मोर एट ऑफिस, वो टाइम थोड़ा फिर आई स्टार्टेड डिवोटिंग मोर टुवर्ड्स लेक्चर्स. तो पहले भी लिखता था, बट देन लास्ट 1.5 साल में आई ट्राइड इट. एंड वन थिंग फॉर सीए फाइनल इन पर्टिकुलर इज यू शुड ट्राई एंड फोकस टू complete your lectures about 6-7 months before exam. So let's say if your attempt is in next November, to कहीं ना कहीं next Feb March तक your lecture should be over. That should be the hard deadline that you should fix yourself. Currently it's a dilemma because course is going to change. हाँ, वो तुम्हारा पर्टिकुलर इशू है. वो फिर इसमें तो एटलीस्ट ये सब्जेक्ट्स तो कर ही लो यार. यू नो एफआर तो रहने ही वाला है, एचएफएम तो रहने ही वाला है, ऑडिट तो रहने ही वाला है, डीटी तो रहने ही वाला है, आईडीटी तो रहने ही वाला है. इतने सारे सब्जेक्ट. अब मल्टी डिसिप्लिन ये की है, इलेक्टिव एक की है, उसके लिए क्यों रुकना? यस सर. ये पांचों सब्जेक्ट खत्म करके बैठे, नहीं ही और शी आस्क्ड मी कि अब मैं क्या करूं, तो उसको मैं बोलूंगा अच्छा इसकी स्टडी कोर्स की क्लैरिटी. एफआर
ऐसे भी conceptual level जी stacks के conceptual level जी ज्यादा से ज्यादा एक chapter निकालेंगे एक chapter डालेंगे थोड़ा mode of asking questions might change but the topics will remain the same. And before you guys ask, I just put down my channel ka link over there. There are a lot of these videos that I have been uploading on this site in terms of subject-wise strategies, ho gaya, ya how I planned my revision for like how I planned self-studies, how I planned for the 1.5 days before exam, how to plan for the 3 hours of exam. So this is my YouTube channel ka link, and जो भी मैंने notes दिखाए, if you want to like refer to them, in Telegram channel, I have uploaded all those notes, even my paper, etc. So you can, just have that glance कि अच्छा किस तरह papers लिखना etc. तो मैं Telegram group का भी link share कर दिया है. Aishwarya, maybe we can share this on WhatsApp as well. Yes, So people want they can Cool. Any other questions? Happy to answer. Otherwise, I think you can call it a day. We are anyways 5 minutes. Any other question, guys? Assuming none, thanks a lot. Thanks again to Aurangabad CSN, WICASA CSN, first well known as WICASA Aurangabad. Thanks, Aishwarya, for this. Thank you. So we are looking forward to have more sessions with you in future. And I look forward to be there in CSN sometime physically also. But Yes, glad to interact with all of you. Thanks a lot. Have a nice day, everyone, and all the best for exams. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.